दिमाग में सेट हो गया. दिस पिक्चर इज सेट इन योर माइंड. I said that what distance equals to speed into time and speed equals to फटाफट दिखेगा distance upon time, time equals to distance upon speed. Is it okay? क्या क्या देखा हमने? यस फास्ट बताएं. distance equals to क्या दिख रहा है? speed into time. यस ये मत सोचिए कि आता है, लेकिन क्योंकि जब सडनली पूछा जाता है ना तो आप ऐसे देखते हो. ऐसे मैं पूछूंगा स्पीड तो अच्छा देखोगे डिस्टेंस इक्वल्स टू दिमाग में दिखेगा स्पीड इनटू टाइम. अच्छा स्पीड तो टाइम नहीं चलेगा. इतना सोचने में तो समय लगा होगा ही आप, लेकिन यदि पिक्चर दिखता रहेगा तो आपको फॉर्मूला सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो क्या दिख रहा है आपको? डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट? टेल मी व्हाट यू आर वाचिंग. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इज इट ओके? what is the formula we have seen? Distance equal to speed into time, speed equals to distance upon time, and time equals to distance upon speed. Is it okay? I said first one that we are going to see in the form of, you know that distance equal to what? Speed into time. Yes or no? Distance equal to, and if I am taking t as a constant, t as a time is constant, so I am finding what? Distance is directly proportional to speed. Yes or not? If the time is constant, when the time is what? Constant, then distance is directly proportional to what? Speed. यदि time आपको 10 hours fixed है, the time is 10 hours is fixed, and if you are moving in the 40 km per hour, so you will move 400 km. Yes or not? 40 km per hour, then you will move what? In 10 hours 400 km. If you are moving the 100 km per hour, you will move what? 1000 km. If you are moving slowly, slow distance, less distance. If you are moving fast, large distance. Yes or not? So distance is directly proportional to speed. Can I say that d1 upon d2 equals to s1 upon s2? What I got? What the formula we got? d1 upon d2 equals to s1 upon s2. Got it? याद रहेगा? When the time constant, what will you say? d1 upon d2 equals to what? s1 upon s2. Is it okay? Clear? This formula clear in your mind? Suppose करो कि मैंने आपको क्या दे दिया, listen me carefully. अच्छा, I said that A and B and C, there are the three friends, and they have got some money. They have got some money 2:3:4, and the total money they have got what? 90 rupees. तो आपको क्या करना है? Add all the ratio. What do you have to do? Add all the ratio. 2 and 3 5 and 5 and 4 9. 9 से divide करें total में, and what do you got? 10. तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें. 10 into 2 20, 10 into 3 30, 10 into 4 40. This is clear? Again I said that हमने क्या बोला? If I got d1 upon d2 equals to, I said that 4:5, and I said that total is 180 kilometer. Yes or not? Then what you will do? Tell me. 4 and 5 at the ratio. Yes or not? 4 and 5 at the ratio, and then divide it. You will get what? 20. 20 into 4 80. 20 into 5 100. Getting my point? Yes or not? कैसे करना समझ में आ रहा? But in which case time is constant, and you have to fill from the question that this question is having what? Time constant. Understood it? This point is completely okay. एक और concept जो बच्चे सोचते हैं जानते हैं, और सोचते हैं जानते हैं, और सोचते ये भी है कि नहीं जानते अच्छे से. एवरेज स्पीड, बड़े सिंपल फॉर्म में बोल रहा हूं मैं, सो दैट यस टोटल डिस्टेंस. एक स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन, आई सेड दैट टाइम, और एक होता है आपका एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. कई बच्चे यही नहीं समझते. अच्छा टोटल क्यों लिख दिया? Why they have written total?
यही सोच है ना, कई बार ये सोचा होगा, कई बच्चों ने दे हैव थॉट, या कई लोगों ने तो मेहनत ही नहीं किया होगा, छोड़ो लिख दिया तो लिख दिया, लेट हिम रीड, राइट, यस और नॉट। बुक वाले ने सोचा एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला रख दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये जो हमारी स्केपिंग कंडीशन है ना, टू स्केप आउट द थिंग्स, दिस इज डिजास्टर्स फॉर अस। सपोज a person moved, what is the formula I said that? Total distance upon total time. A person moved 40 kilometer in what I said that 1 hour, 200 kilometer in 3 hours. Then वो रेस्टोरेंट में रुक गया, कोई डिस्टेंस नहीं मूव किया, 2 घंटे के लिए रेस्टोरेंट में, जो रुका वो भी टाइम काउंट होगा, है ना। बस यही सबसे बड़ा क्रक्स है। यदि आप बीच में मस्ती करो, फिर टारगेट में पहुंचोगे, जहां पे आपने मस्ती किया दैट टाइम विल बी आल्सो इंक्लूडेड, यस और नॉट। सो द टाइम टेकन इज व्हाट, 2 hours. Thereafter you moved, I said that 300 kilometer in 4 hours. So total distance ये भी तो जीरो काउंट होगा। So 240 become what, 240, and this is 540. 540 divided by, I said that 10. So what is the average speed of the journey? 54 kilometer per hour. Understood it? So what is the average speed formula? Just tell me. Total distance upon total time taken. Now it is clear, completely okay. What is the average speed formula? Total distance, total time. यदि आप कहीं पे गाड़ी खराब हो जाए और वहां पे 10 मिनट रुक गए आप, तो that time will be also count 1/6 hours. Yes or not? But distance traveled is 0. Distance traveled is 0. So मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया how to solve the ratios. क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज होगा, मैं वहां पे एवरेज स्पीड भी पूछूंगा, एवरीथिंग विल आस्क. इज इट ओके? सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? रेडी फॉर द क्वेश्चन? और व्हाट इफ द टाइम कांस्टेंट, व्हाट द फॉर्मूला? जस्ट टेल मी. d1 upon d2 equals to s1 upon s2. इज इट ओके? लिखेंगे a portion traveled certain distance, a person traveled certain distance with a speed of 40 km per hour in a given time interval, in a given time interval. Clear? He traveled some other distance with a speed of 60 km per hour, with a speed of 60 km per hour in the same time period. In the same, क्या लग रहा है ये क्वेश्चन किसका है? Time constant. If the total distance traveled in the journey is 500 kilometer, if the total distance covered in the journey is 500 kilometer, then find out first question, distance traveled in the first part, and second part of the journey. Next, time taken in the first part and second part of the journey. Third question, average speed of the journey.
फर्स्ट में मैंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी. सेकेंड क्वेश्चन आई सेड दैट टाइम टेकन इन द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी. और टाइम टेकन जो है कांस्टेंट आएगा. यदि फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में मान लो आपका आ गया 10 घंटा, तो सेकेंड पार्ट में भी क्या आएगा 10 आवर्स, बिकॉज वी आर डूइंग विच टॉपिक, टाइम कांस्टेंट. डू इट. d1 upon d2 equals to s1 upon s2. So we have put the value, this is यहाँ पे d1 होगा, there is d2. What is speed 1 and speed 2? 40 km per hour and what? आप क्या लिखोगे d1 upon d2 equals to what? s1 upon s2. और s1 क्या लिखा आपने 40 km per hour. And what you have written s2? Tell me. 60. और कैंसिल किया क्या मिला आपको 2/3. तो d1 upon d2 का रेशियो क्या मिला 2:3. तो टोटल हमने बोला था एड द रेशियो, यस और नॉट. और व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? What is the total distance? 500 किलोमीटर. तो आप क्या करोगे 500 को क्या करोगे 5 से डिवाइड, एड द रेशियो. अरे d1 by d2 equals to, if you have got d1 upon d2 equals to 2/3, it means 2:3. yes or not? तो 2/3 is also ratio. और टोटल डिस्टेंस किसका दिया हुआ 500, क्योंकि हम लोग को रेशियो किसका मिला d1 d2 का. तो टोटल डिस्टेंस भी किसका होगा टोटल भी किसका होगा डिस्टेंस का. एंड उसके बाद आपने 100, तो ये 100 इंटू 2 क्या हो गया, एंड d2 क्या बन गया 300. yes or not? The d1 you have got what 200, d2 you have got what. अब टाइम निकालना है, तो t1 इक्वल्स टू क्या होगा टाइम इक्वल्स टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. पिक्चर याद है ना ट्रायंगल. टाइम इक्वल्स टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो पहले पार्ट का टाइम t1 लिखोगे d1 अपॉन s1, और t2 निकालोगे d2 अपॉन s2. और दोनों में सेम आएगा, क्योंकि हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं टाइम कांस्टेंट. यस और नॉट? यस. तो इसका मतलब हमें टाइम भी मिल गया, यस, और हमें टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया, वो है दिया हुआ. तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. इज इट ओके? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, विच फार्मूला दैट यू शुड, विच फार्मूला दैट यू शुड यूज. d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू व्हाट टाइम कांस्टेंट है ना. तो क्या लिखोगे d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू s1 अपॉन, और s1 की वैल्यू क्या दी हुई है, तो d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू 40 अपॉन 60. कैंसिल किए तो क्या मिला d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू व्हाट 2:3. तो रेशियो, और ये d1 d2 है ना, और यहां पे क्या दिया हुआ टोटल डिस्टेंस. तो 2 और 3 को ऐड कर दोगे क्या मिल जाएगा, टेल मी 5. यस, क्या मिलेगा 5. एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर. तो 5 को 500 से डिवाइड किया, you have got what 100. Time constant means was d1 upon dt equals to what s1 upon s2.
And what is the S1 upon S2? Yes, tell me. 40 by 60 cancel out. What do we got? 2 upon 3. और हमें total distance कितना दिया हुआ है? 500. So 2 and 3 become what? 5. I have divided it. It become what? 100. तो D1 क्या हो जाएगा? Tell me. 2 into 100. 200 and D2 will be what? 3 into 100. आप ये लिखने के बजाय आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ये भी कर सकते हैं. Is it okay? So this is the first answer. Second answer, I said that time taken in the first part and the second part दो है ना part. So D1 upon and the D1 क्या है आपका 200 और उसमें आप मूव किस स्पीड से कर रहे थे 40. याद है ना इस ट्रायंगल में distance equals to speed into time. The time equals to distance upon speed. Time equals to. So कैंसिल किया आपने क्या मिला 5 hours. 100% D2 भी आपका क्या आएगा 5 hours आएगा. लेकिन यदि आप करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं D2 upon S2 300 and what is the time? Speed was 60 किलोमीटर. कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा. प्लीज यदि टाइम कांस्टेंट तो आपको पता होना चाहिए कि T1 जो निकला वो सेकंड T2 भी निकलेगा. यस तो आप डायरेक्टली T2 का क्या लिख सकते थे 5 hours. थर्ड क्वेश्चन था एवरेज स्पीड. एंड एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना टोटल डिस्टेंस 200 and 300 और इसमें कहीं रुका है नहीं. सो दिस इज एन ऑलरेडी इट इज व्हाट 500 एंड देन 5 plus 5 means टोटल टाइम T1 plus T2 500 upon 10 cancel out 50 kilometer per hour. Is it okay? Can you do the next question fast? क्योंकि आप जब क्वेश्चन को देखते हैं तो वहां पर एक स्टोरी की फीलिंग आनी जरूरी है, लेकिन आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तो आप सोचते हैं मुझे फार्मूला दिख जाए. मैंने फार्मूला की तो बात ही नहीं करी. आपसे मैंने बोला कि टाइम कांस्टेंट दिख रहा है. क्या दिख रहा है? और जब टाइम कांस्टेंट दिखे तो अच्छा ये फीलिंग आ जाए कि यार डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. क्योंकि आप फार्मूला देखते हैं ना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम दिखता है ना फार्मूला. ये तो फार्मूला जग जाहिर है, सबको जानते हैं. डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट स्पीड इनटू टाइम. तो डायरेक्टली टी कांस्टेंट तो डी और एस डायरेक्टली दिख रहा है आपको. दिख रहा है कि नहीं? तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. इसका मतलब D1 अपॉन D2 इक्वल टू S1 अपॉन. इज इट ओके? रेडी फॉर द क्वेश्चन? लिखेंगे a portion traveled a part of distance with a speed of 60 kilometer per hour in a given time interval, and he covered some other distance with a speed of 80 किलोमीटर पर आवर. क्या आपको दिखने लगा? D1 upon dt equals to 60 upon 80 with a speed of 80 kilometer per hour in the same time interval. If the total distance covered in the journey is 420 kilometer, then find out first question, distance covered in the first part of the journey and second part of the journey. Second question, part of the journey
and second part of the journey. Time taken in the first part of the journey and in the second part of the journey, and average speed of the journey. (180 kilometer), second is 240 kilometer, and time taken in the first part of the journey is what? 3 hours, and second will be also 3 hours. And average speed क्या हो जाएगी? Total distance 420 and the total time taken in the journey is 6 hours. So we got what? 70 kilometer per hour. So I said d1 upon d2 equals to what? S1 upon S2, and S1 is given what I said? 60 upon 80, cancel out, you got 3:4, and total distance of the journey is what? 420, save, and we got 60. So 60 into 3, d1 क्या मिल गया मुझे? 180 kilometer, and d2 I got what? 60 into 4, 240 kilometer. Is it okay? Completely okay? And thereafter, this is the first part, and the second part I said that t1 equals to d1 upon s1, and d1 क्या आपका 180, and speed in the first part of the journey is 60. You got 3 hours. The t2 will be also, I said that 3 hours, because time constant. This question is talking about the first part में जो time लेगा, second part में भी it will be all the same. Third is, I said that average speed, it is total distance upon total time taken, and total distance is 420 and total time taken 3 and 3, so 420 upon 6, it is becoming what? 70 kilometer per hour. Is it okay? All of you are comfortable with this time constant? Next one, we are going to see speed constant. Can I remove? I said that distance equals to what? Speed into time. Or यदि speed is constant, can I say that d is directly proportional to t? D is, when the speed is constant, then d is directly proportional to what? T. And can I say that the formula, like I said, d1 upon d2 equals to what? t1 upon t2. Is it okay? In which condition? Speed constant. दिख रहा है d equals to s और t, s speed constant, then d और t directly क्या दिख रहे हैं? Proportional. Yes, so this is your, ready for the question? लिखेंगे, a person traveled certain distance with a given speed in 10 hours, with a given speed in 10 hours, and he covered some other distance with the same speed. What is the meaning of same speed? Constant. With same speed in 15 hours. If the total distance covered in the journey is 600 kilometer,
Then find out first question. Distance covered in the first part and second part of the journey. Second, speed in the first part and second part of the journey. Third question, एवरेज स्पीड. इसमें ध्यान रखेंगे स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी और सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में क्या होगा, सेम. और ये स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड भी सेम ही आएगा. So this topic is talking about which one? Speed constant. Yes. And when the speed constant means what? d1 upon d2 equals to what? Simple. The way approach we have taken in the last question, the same it is. Here it is d1 upon d2. And then what is the time taken in the first part of the journey? 10 hours. Second part of the journey what? 15 hours. So 10 and 15 get cancelled. What left? 2 upon 3. And what is the total distance covered in the journey? 600. So 2 and 3 add kiya and what become? 5. Cancel out, we got what? ये सबका आ गया? Everyone has got it? Yes or not? 600 upon 5 means what? 120. And we have got, like I said, that. So 120 d1 equals to what? 120 into 2, 240 kilometer. Yes. Sorry, ये क्या है? 240 kilometer. And d2 equals to what? 120 into 3, 360 kilometer. This is the first part of the answer. Yeah. And thereafter we were watching the second part. And the second part I said that it is talking about speed. Yes or not? और speed क्या होता है? Distance upon time. दिख रहा है? Distance equal to speed into time. The speed equals to distance upon time. तो d1 upon t1. Yes or not? तो d1 आपका क्या था? Yes, tell me. 240 and time taken was what? Yes, 10 hours. So it will be 24 kilometer per hour और speed 2 भी आपका वही आएगा. Yes or not? 360 अपॉन क्या करोगे आप? 15 and you will get what? 24 किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड कांस्टेंट है और हमने बोला था स्पीड कांस्टेंट के केस में आपका एवरेज स्पीड भी सेम आएगा when there is no person is sitting and wasting the time here and there. Yes or not? And what is the average speed I said? Total distance upon total time taken. And total distance what? 600 upon total time taken 10 plus 15. That is I said that 600 upon. So 25 से ये cancel हो जाएगा. It will come 24 kilometer per hour. Is it okay? Got it? Write down the next. The speed constant समझ में आ रहा? What is the formula? d1 upon dt equals to what? t1 upon t2. Write down. A person travelled kilometer. A person travelled 400 kilometer with a given speed. A person travelled 400 kilometer with a given speed in some interval of time. In some interval of time. Then he covered 500 kilometer
Then he covered 500 kilometer in the second part of the journey with same speed, in some other time interval, तो इसका मतलब हमें T1 और T2 नहीं पता. Yes. If the total time taken in the journey is 18 hours, if the total time taken in the journey is 18 hours, then find out first question. Time taken in the first part and in second part of the journey. Time taken in the first part and in second part of the journey. Second question. Speed in the first part and second part of the journey. हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? स्पीड कांस्टेंट. थर्ड क्वेश्चन, एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी. I said that d1 upon d2 equals to what? Or d1 was given what? 400 upon d2 500. Cancel out. We got t1 upon t2 equals to 4 upon 5 ratio. And what is the total time? 18 hours. 4 and 5 I have added, it become what? 9. And I have divided by 9, I got what? 2. So t1 will be what? 4 into 2? 8 hours, and T2 will be what? 5 into 2, 10 hours. This is the first answer. And then second answer is what I said, that speed in the first part of the journey. So it is D1 upon T1, and D1 is what? 400 upon 8, 50 km per hour. And this question belongs to a speed constant. So it means what? S2 will be also what? 50 km per hour. Third question, average speed will be the same because there is no stoppage. So average speed will also come the same. I said that total distance covered is what? 900, 400 and 500 plus, and total time taken is what? 18 hours. So T1 is what I said, that 8 and 10, and it is what? 50 km per hour.
Is it okay? Understood this topic? Yes? साथ में स्टोरी समझ में आने लग गया क्या हो रहा है? Next one we are going to see, yes, distance constant. Which one? Distance equals to, you know that speed into time. Yes or no? Can I say that speed equals to distance upon time? Yes or not? Speed equals to what? And if I say that if d is constant, it means speed is inversely proportional to time. Yes or not? Speed is, यदि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, सपोज करो आपने स्पीड बढ़ा दिया, जल्दी पहुंचोगे लेस टाइम, और डिक्रीज कर दिया स्पीड तो लेट से पहुंचोगे. डिस्टेंस कांस्टेंट ना, इसका मतलब है कि स्पीड एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यस और नॉट? यस और नॉट? समझ में आ गया क्या? तो फिलहाल हम लोग अभी इस बेसिस पर फ्यू क्वेश्चंस विल डू. इज इट ओके? आई सेड दैट, what the concept I said that, यदि आप अपने स्पीड को ध्यान से सुनेंगे, if will I said that, listen me, what is the relation between speed and time and the distance constant? Inversely proportional. If you are moving, suppose करो कि आप एक नॉर्मल स्पीड से you leave your house and reach to the success point at exact time. Understood it? Yes or not? एक आपका नॉर्मल यूजुअल स्पीड है, and with usual speed you are taking one usual time. Yes or not? And one day you have what? Increased your speed. What I said that? And then increase your speed to 5/4. कितना? कितना स्पीड कर दिया आपने? Yes, tell me. कितना कर दिया? कितना? How much? 5/4. तो टाइम क्या लोगे? 4/5. क्या लोगे? Again I said that one day you are moving and then normal speed, usual speed, and reaching on time t, reaching on time, or your normal speed is s, और आपने क्या कर दिया? Tell me. Sorry, increased your speed. And what is the speed increased? 5/4. Then time taken, time कम लोगे ना, 4/5 t. पहले you are, earlier you are taking t, now you are taking what? 4/5. समझ में आ गया? यस और नॉट? तो आप कहाँ पहुंचोगे? एट सक्सेस पॉइंट विल रीच अर्ली. कुछ लोग यहाँ अर्ली पहुंचे रहते हैं. सो आई सेड दैट 5/40. तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, कैन आई से दैट इफ द यूजुअल स्पीड इज, यू हैव इंक्रीज 5/4 स्पीड, पहले आपकी स्पीड क्या थी? s, and your usual time taken is, now you increase your speed 5/4s, your time taken is what? I said that 4/5 t. तो आप जल्दी पहुंच गए ना, and you reach success point. I said that 12 minutes early. 12 minutes. तो ये 12 minutes early क्या है? Just tell me. t minus 4/5 t equals to what? 12 minutes. 12 upon what? अरे ये समझ में आया ना? ये पहले का टाइम था, अब ये क्या है? आपने इंक्रीज करने का टाइम. तो आप कितने पहले पहुंचे? तो ये तो डिफरेंस ऑफ द अर्लियर टाइम ऑन द प्रेजेंट टाइम, एंड दैट विल बिकम 12 minutes. एंड 12 minutes what? 12 upon 60. एंड व्हाट यू विल गेट? व्हाट? 1/5. और ये क्या मिलेगा? t 5t minus 4t upon 5. तो ये क्या बन जाएगा? t upon 5 and 1/5 hours. So 5 कैंसिल, क्या बचा? तो what is your usual time? What is your usual time? 1 hour. Yes or not? और यही बोल देता है if the usual speed is 5 km/h, then what is the distance of success point from your home? So distance equals to क्या लिखते हैं?
एंड स्पीड आपने क्या मैंने बोला 5 किलोमीटर पर आवर और व्हाट इज द यूजुअल टाइम, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, समझ में आ गया, इतना आसान समझा, I have converted into R. The reason behind, कोई बात नहीं, आ गए ना आप It is better to come back. तो 12 minutes means what? 12/61 हमने कन्वर्ट कर दिया आवर में, क्योंकि हम लोग स्पीड वगैरह सब किस में ले रहे हैं, किलोमीटर पर आवर. सो रेडी फॉर द क्वेश्चन. पहले तो सेम क्वेश्चन दे दूं, यही पकड़ में बन जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट यू कैन इजीली कैच. अ पर्सन मूव, a person move with usual speed and reach his destination on time. Reach his destination. One day he increased his speed to 5/4. One day he increased his speed to 5/4 times and reached 6 minutes early. 6 minutes early. Is it okay? Then find out first question. Usual time taken. Usual time taken. Second, if the speed is 20, if the usual speed is 20 km per hour, then what is the distance do it. Usual speed and the usual time taken is t, but the person has increased his speed by, yes, now the time taken will be what, 4/5t, yes or not, less time taken. So that will be t minus 4/5t equals to what, 6 minutes, or 6 minutes to convert into hours. So that becomes 5t minus, yes, tell me, 4t, यहाँ से 5 into t 5t और minus 4t upon 5 and it become what, 1/10. So t upon 5 equals to 1/, so 5 से 2, so t equals to what, half hour. t क्या मिला हमें, so what is the usual time taken, half an hour. Second part of the question was, what is the distance if the speed is 20, the speed into time, and what is the speed, I said that 20 into half, so the distance is what, 10 kilometer, yes or not, got it. ये समझ में आ गया आपको, this concept is okay. ये क्या था, reaching early. What is this question, reaching early, yes or not. Again do it fast, this time question finished, answer should be ready, है ना. अब क्या नाम है, धनराज पिल्लई, चलो डैनी. Dhanraj left his home
left his home to a particular destination, Firoz Kotla. होटल में तो हमेशा अर्ली पहुंचना. Left his home to what? Firoz Kotla, and reached on time with usual speed. And reached on time with and one day he increased his speed to one day he increased his speed to 5/3 and reached 48 minutes early. 48 minutes early. If 48 minutes early, if छोड़ दें, then find out usual time taken in the journey. First question. Find out usual time taken in the journey. Second, if his speed is 7 km/h, then what is the distance from his home to Firoz Kotla? So what? If the speed is 5/3, the time taken is what? Tell me. 3/5. So time taken will be what? Speed become what? 5/3 of his original speed. The time taken will be what? I said that 3/5 of the original time or usual time. इसका मतलब जल्दी पहुंच रहा है. So t minus 3/5t equals to what? तो ये difference होगा. It means to reaching early. Reaching early is what I said, the difference of the time. So 48 by what I said, that 60, and I got 12 4 ja and 12 5 ja. So here it is 5t minus 3t upon 5, 5t, 5 into t, 5t. And can I cancel it? 5 cancel. So it become what? 2t equals to 4. So ऐसे भी काट सकते हैं. Yes or not? So t equals to what I got. And this is the first part of the question, and the second part of the question is talking about, yes, distance equals to speed into time. Speed is what? 7 km/h, and the time taken is what? 2 hours. That becomes what?
14 kilometers. Is it okay? Completely okay in your mind? अभी तक हमने देखा रीचिंग अर्ली, और यही मैं स्पीड ऐसा कर दूंगा, ये टेल मी स्पीड हमने क्या कर दिया, डिक्रीज टू 3/5, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम लेगा, तो ये माइनस ये करोगे, और ही इज रीचिंग, आई सेड दैट दिस मच ऑफ द मिनट्स लेट. अंडरस्टूड इट? अरे सिंपल सी चीज है, टाइम बढ़ गया ना, 5/3 t इज ग्रेटर देन t ना. यस, सो 5/3 का मतलब ही क्या है, मोर देन 1, और t क्या दिख रहा है, 1. सो राइट डाउन. A person move with usual speed. A person move with usual speed and reaches his destination on time. Reaches his destination on time. One day he decreased his speed to 3/5 times and reached 36, I said reached 36 minutes late. Then find out usual time. Find out. Second question. If the speed is 10 km per hour, then what is the distance? Time speed is decreased by what? तो टाइम कितना हो जाएगा, 5/3t, more time taken, so 5/3t minus what, usual t, and he reached what, I said that 36 minutes late. Yes or not? So that means what, ये जो टाइम ले रहे थे आप ज्यादा, और ये पहले वाला टाइम, तो माइनस करोगे तो 36 मिनट पहले लेट पहुंचे आप. Yes, and that is, I'll have to divide it by 60 because converting into hour, so it will become 3t, so 5t minus, and that is cancel out, what I'll get, 3/5. So this 3, I said that 3/5, so 2t upon, so 3 will go this side and 2 will go this side, so t equals to what, 9, and 2 will come down, 5 2s are 10. Yes or not? 3 3s are 9, so 9/10 hour, इसका मतलब in 54 minutes. Second question was, I said that distance equals to what, speed into time, and speed क्या था आपका 10 km per hour according to the question, and t is what, 9/10, that is, I said that 9 km. Is it okay? आपने इस लेवल पे डिस्टेंस कांस्टेंट को समझा, जिसमें कि हमने क्या बोल रहा था, you have increased the speed, yes or not, you have decreased the speed, you have increased the speed, reached early, and when you decrease the speed you reached late. क्या बोला मैंने, अच्छा, स्पीड इज, आई सेड दैट, अभी आपने देखा व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. यस और नॉट? कैन आई से दैट इट इज
it is about S1 upon S2 equals to T2 upon T1. Yes or not? Yes. और यदि मैं इसको ऐसे करूं तो S1 T1 equals to what? What will get? S1 T1 equals to what? S1 T1 equals to S2 T2. कब होगा? और ऐसे भी आप देख सकते हैं कई तरीके हैं. डिस्टेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट मींस स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इनटू टाइम को आपने कांस्टेंट कर दिया डिस्टेंस, देन S1 T1 इक्वल्स टू व्हाट? यस, इज इट ओके? यही है ना, S1 इंटू टी इक्वल्स टू डी, और डी को आपने क्या ले लिया? कांस्टेंट. तो व्हाट द फॉर्मूला यू विल गेट? S1 T1 इक्वल्स टू, इज इट ओके? ये सेम क्वेश्चन है जैसे मैं अभी कर रहा था. यहां पे मैं बोलूंगा लिसन मी, I moved with, I said that 6 kilometer per hour. Yes or not? I moved with 6 kilometer per hour and I reached on time. Yes, यहाँ पे speed दिया हुआ. It is not in the form of, I said that increase the speed up to this. And next day I moved with 10 kilometer per hour. Yes or not? And I reached 30 minutes early. तो पहले टी ले रहा था. समझ में आ रहा है क्या लिखूंगा मैं? 30 by, is it okay? बहुत आसान. Again I said that I moved with 6 kilometer per hour and reached on time. And the next day I moved with what? 10 kilometer per hour and reached what? 30 minutes early. तो it will become 1 by 2. और यहां से आपका t का वैल्यू निकल जाएगा. yes or not? अरे निकलेगा ना. और उसके बाद आप क्या करोगे? आप यूजुअल टाइम निकालोगे और फिर मैं बोलूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट डेस्टिनेशन. वो ऑलरेडी आप t जो निकाल लोगे ना 6 इंटू टी, वो आपका क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा है? सो राइट डाउन. A person moved with 6 kilometer per hour and reached his destination. A person moved with 6 kilometer per hour and reached his destination on time. One day he moved with 10 kilometer per hour and reached his destination 30 minutes early. 30 minutes early. Then find out usual time and distance of the destination.
आप यहीं पे काट देते 1/2 हो जाता है ना, सो आई आर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड. 30 60 1/2. रीच्ड. यहाँ पे क्या लिखोगे 6 इंटू टी, यहाँ पे 10 इंटू टी माइनस 1/2. ये कट गया ना, ठीक है. 30/60 लिखा हुआ ठीक है, कट गया तो ये क्या हो गया 1/2. तो 10 इंटू टी माइनस 1/2 ना, 6t इक्वल्स टू 10 इन द ब्रैकेट t माइनस 1/2. अब 10 को किससे, इससे भी करोगे और इससे भी करोगे, तो 10t माइनस 5. टेन टी माइनस 1/2 इंटू 10 करोगे ना, 5 कहाँ से, तो 1/2 कैंसिल हो गए. 10 इससे पहले इससे मल्टीप्लाई किया 10t, नाउ 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 1/2. 10, हाँ 10 लिखो, पहले 10 लिखो, 10 इंटू 1/2, 10 इंटू 1/2. सो 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स में, 10 ऊपर रहेगा ना, तो क्या बचा आपके पास 6t इक्वल्स टू 10t माइनस 5. तो क्या है 5 को उधर लगे 60 को इधर लाया, कौन 10t बढ़ाया या 60 बढ़ाया है? मेरे खड़े होने से डरने लग जाते, दिमाग इधर उधर चलने लग जाता. सो आपका टाइम क्या आया था यस टेल में 5/4 आवर्स. यस और नॉट 5 बाई यूजुअल टाइम क्या निकला, क्या क्या निकला, तो 6t और ये क्या हो गया कैंसिल होकर 10 इंटू टी माइनस 1/2. 6t 10 इंटू टी 10t माइनस 10 इंटू 1/2. So 2 से 10 कट गया 5. So 6t इक्वल्स टू व्हाट 10t माइनस 5. ये केवल आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं. तो 10t बड़ा है और 6t क्या है छोटा. दिस 10t विल गो दिस एंड 6t इधर चला गया, इसको यहीं रखा, -5 कम हियर. तो 4t इक्वल्स टू व्हाट 5. So t इक्वल्स टू व्हाट 5/4 आवर. यस और नॉट. तो व्हाट इज द यूजुअल टाइम. So this is the usual time that he is to take to what reach this destination. Yes or not? And then हमने उसके बाद बोला what is the distance. आपको यही लिख लेना है S1 T1. S1 क्या था 6 and time T. तो 6 into what 5/4. So 2 or this is 3. So 15/2 means 7.5 kilometer. Yes or not? Ah? 1.5 ये 7.5 D1. तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट कर रहे हैं ना, आप एक ही जगह बार बार जा रहे हो ना. यदि आप अपने घर से सक्सेस पॉइंट आ रहे हो तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो जाएगा. तो D1 हो या D2 हो, आप इधर भी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा सेम आएगा. अंडरस्टूड इट. एनीवे तो इसमें इजी यहाँ पर कि ऐसे कैलकुलेशन में फंसो, इससे बेहतर है इधर वाले में रख लो. हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं डिस्टेंस कांस्टेंट. तो डिस्टेंस विल बी आइदर यू फाइंड दिस साइड और दिस साइड. इज इट ओके. अरे समझ लो समझ लो समझ लो. हटाओ ना. यूपी बिहार में जाएंगे तो बोलेंगे बुझला, वहां पे बुझला हो जाता है. और हाँ बुझलवा ऐसा नहीं होता. पता नहीं, मैं भी एग्जैक्टली नॉट नोइंग, ओनली आई सेड दैट इट इज इन अ ब्रोकन फॉर्म ऑफ भोजपुरी एंड बिहारी एंड इट्स नॉट एग्जैक्ट फॉर्म. जो एग्जैक्ट बोलते हैं उनका अलग एक मिठास होता है.
मैं थोड़ा सा भोजपुरी बनारस साइड का, क्योंकि मैं बनारस साइड का हूँ, तो वहाँ पे ऐड करता हूँ उसको, बट इट इज़ वो भी मैंने लाइफ में पूरा देखा जाए तो चाइल्डहुड में 3 मंथ्स रहा है और पूरी लाइफ में कभी 2 दिन गया हूँ, 3 दिन गया हूँ, तो ऐड ऑन करोगे तो 1 मंथ इन होल लाइफ। तो वो 3 मंथ्स बचपन वाला हटा दो तो 1 मंथ आई हैव गॉन टू द माई। तो वो कभी कभी लोग मिल जाते हैं ना सराउंडिंग एरियाज के, तो देन आई, और एक्चुअली ड्यूरिंग द आई सेड दैट मैरिज सेरेमनी एंड ऑल, उसमें जब आ जाते हैं ना, दे आर स्टार्टेड स्पीकिंग भोजपुरी एंड ऑल, देन उस समय आप अंडर द प्रेशर यू कम एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग फॉर सर्टेन इंटरवल। उसके बाद लगता है हम कर क्या रहे हैं, रियली इट इज फ्लिग, it has been somewhere clogged something here, and in this one also not able to speak out, क्योंकि एक्चुअल में कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, इट शुड बी फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब ऑटोमेटिकली इट इज कमिंग। कभी कभी बोलते हैं ना इंग्लिश फ्लुएंट, जनरली लोग सोचते हैं इंग्लिश फ्लुएंट मींस व्हाट, फास्ट इंग्लिश। अरे ऑटोमेटिकली इट शुड कम आउट। सो दैट अब यदि वो स्लो कर दिएगा अपना स्पीड तो क्या होगा, लेट पहुंचेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, टी प्लस हो जाएगा, यस और नॉट। पहले अर्ली पहुंच रहा था तो 6 इंटू टी, अब मैं इसकी स्पीड क्या कर दिया, कम कर दिया, और ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन व्हाट, हाफ एन आवर लेट। तो टी प्लस, समझ में आ रहा है, टी प्लस, वो टाइम क्या ले रहा है, लेट का मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है, यस और नॉट, इज इट ओके? सो राइट डाउन, a portion moved with the speed 6 km per hour and reached his destination on time. Reached his destination on, a person moved with the speed 6 km per hour and reached his destination on time. Is it okay? Next day he moved with 4 km per hour and reached his same destination 30 minutes late. 30 minutes late. Then find out, first question, usual time taken, and second, distance. टी तो 1 आ रहा है, टी 1 आ रहा है ना, टू टी इक्वल्स टू 2 आर। 30/60 को कैंसिल करो, 1/2। So what we have seen, like I said, a person moved with 6 km per hour and reached on time t, and the next day he started moving with 4 km per hour, but he reached 30 minutes late. So t plus 30, and t plus 30 means divided by 60. So 6t
equals to 4t plus what? 1 by 2. Cancel करोगे तो 1 by 2. And then 6t equals to 4 into t, 4t, and plus 4 into 1 by 2. So आपने 2 से cancel 2, 2 2 जा 4. So 6t minus 4t equals to what? 2. So 2t equals to what? 2, and 2 से 2 cancel 1. So t equals to what? 1 hour. So usual time is what? 1 hour. And I said that second part of the question, distance equals to what? S1 T1 इधर वाले में ले लें. 6 into t, and 6 into t is 6 kilometer. Is it okay? Okay. So I said that average speed means what? I said that total distance upon total time taken. Yes or not? And we can say like average speed d1 plus d2 plus d3 upon t1 plus t2 plus t3. Is it okay? And here we are watching, like I said, डिस्टेंस जो भी हो, जीरो भी हो, तब भी आपको उसको कवर करना ही करना है, ऐसा नॉट. एंड वट एवर द डिस्टेंस इन द लास्ट क्लासेस वी हैव सीन आल्सो लाइक दिस. तो वन क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट. A person traveled 150 kilometer in 2 hours, 150 kilometer in 2 hours, then stopped at a restaurant for 2 hours, then stopped at a restaurant for 2 hours, and again he resumed his journey, and again he resumed his journey and moved, again he resumed his journey and moved 100 kilometer in 3 hours due to bad road condition, and finally in the last part of his journey, he moved 200 kilometer in 3 hours. 200 kilometer in 3 hours. Then find out average speed of the journey. Yes. Average speed of the journey. So what you should do? What is the average speed I have said? It is a total distance and in the total time taken. Yes or not? In the first part of the journey he moved how much? I said that कितना move किया था? 100 kilometer. 100 150.
in the first part of the journey 150 kilometer to D1 is 150 and T1 2 hours it has taken. Thereafter he stopped at a restaurant and that time distance traveled is what? 0, and that time consumed is what? 2 hours. Understood it? Then he moved, what I said, that 100 kilometer, and that time he took what? 3 hours due to bad road condition. Thereafter in the last part of the journey 200 kilometer, and then time taken is, I said that, 3 hours. The total distance, ये जीरो लिखना बहुत जरूरी है, आप ये इससे आपको एहसास रहेगा, याद रहेगा. Average speed में if the distance is not covering at that time, that is also included. तो यहाँ पे तो कोई स्पीड ही जीरो है, yes or not? डिस्टेंस कवर्ड जीरो, टाइम टेकन 2, तो लोग बोलेंगे यहाँ पे तो स्पीड ही नहीं था, कोई है ना, तो एवरेज स्पीड में कैसे इंक्लूड करेंगे? तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस. So I said that the total distance covered is what? 450 kilometer. Up time taken is what I said, that 10 hours. Cancel out किया तो क्या मिला मुझे? 45 kilometer per hour is the, I said that, average speed of the journey. Understood it? Got it? तो ये तो आसान से पिछले क्लासेस में भी आपने ऐसा देखा होगा. Write down the next question. In this question, distance will not be given. Distance will not be given, but time will be given. Yes? What will be given? Time. Yes or not? And then speed will be given also. Suppose I said that a person, listen me carefully, a person moved 50 km per hour with a speed of 50 km per hour for 2 hours. तो इसका मतलब distance निकल गया. S1 into T1. What is the distance? तो यदि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, स्पीड एंड टाइम दिया, इट मीन्स यू आर नोइंग द व्हाट? डिस्टेंस. यस और नॉट? तो इन द नेक्स्ट एवरेज स्पीड में क्या रहेगा? यस, इफ द डिस्टेंस इज नॉट गिवन एंड स्पीड इट, यहां पे तो क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन. इफ द स्पीड एंड टाइम इज गिवन, देन हाउ टू फाइंड आउट? आई सेड दैट. तो स्पीड का मतलब ही हो जाता है S1 T1. फटाफट फर्स्ट डिस्टेंस क्या हो गया? S1 T1 सेकेंड डिस्टेंस, S2 T2 third distance, fourth distance like this, and fifth, and the time is already given, T1 plus T2 plus T3 dot dot dot. Is it okay? Got it? So as the question I am giving, at the same time keep on solving. Is it okay? So write down. A person travel with a speed of 60 km per hour for 2 hours. साथ में करते भी रहे. 60 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा ऊपर में? 60 इंटू 2 डिस्टेंस, एंड अपॉन पहला क्या आ जाएगा? 2. T1 आ जाएगा ना. T1 क्या हो गया? 2. तो ऊपर में क्या हो गया? 60 इंटू फर्स्ट डिस्टेंस, एंड नीचे में क्या हो जाएगा? यस टेल मी. 2. ये है ना एवरेज स्पीड इक्वल्स टू व्हाट? ये क्या मिल गया आपका? डिस्टेंस. यस, एंड फॉर द डिस्टेंस व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, स्पीड इनटू टाइम. अ पर्सन ट्रेवल्ड with a speed of 60 km per hour for 2 hours, and further he increased his speed, and further he increased his speed, and further he increased his speed, and moving with 80 km per hour for 4 hours. 80 km per hour for 4 hours. लिख लिया आपने S2 T2? Yes. Then he stopped his motor
at a petrol filling station, at a petrol filling station for half an hour, for half an hour. तो what is this? 0 plus 0 लिखेंगे आप, और नीचे में क्या लिखेंगे? हाफ. Yes, the time taken is what? Half an hour. Then further he continued his journey and moved with a speed of 100 km per hour for 1 hour. $100 km per hour for 1 hour, and again stopped at a restaurant for snacks. Again stopped at a restaurant for snacks for half an hour. Yes, again distance traveled is 0, time taken is half an hour, and in the final part of his journey he moved with 150 km per hour, and in the final part of his journey he moved with 150 km per hour for 1 hour. Then find out average speed of his so 2 hours, 150 km per hour for 2 hours. Then find out average speed of the journey. आ गया? तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 840. टाइम टेकन इज व्हाट? 10 hours. So what is the average speed? 84 km per hour. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता था कि जैसे दो ट्रेनें चल रही हैं आपस में, एक ने एक्सीडेंट कर लिया, वहाँ पे 4 घंटा टाइम कंज्यूम हो गया, अगेन द ट्रेन हैज स्टार्टेड हिज जर्नी एंड रीच्ड हिज व्हाट डेस्टिनेशन, देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. बच्चा सोचता था क्यों एक्सीडेंट कर लिया, ऐसा क्वेश्चन क्यों दे देता है ना? When they started finding when the accident has taken place, फिर एवरेज स्पीड कैसे निकालूं मैं? So that is I said that dilemma kind of question. But if you understand one thing that कि कुछ नहीं मूव कर रहा है तो वहाँ पे सिंपली कर ले डिस्टेंस 0 एंड द टाइम टेकन वट एवर द टाइम इन द एक्सीडेंट ड्यूरिंग दैट, वो भी आप लिख ले. समझ में आ गया ना? यदि बीच में एक्सीडेंट भी हो गया एंड देन देयर आफ्टर यू कंटिन्यूज दिस जर्नी, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी दैट यू कैन अंडरस्टैंड. यस है ना? क्योंकि उस समय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0. अंडरस्टूड इट? राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अनदर इफ आई, तो इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा क्वेश्चन क्या था? 60 km per hour for 2 hours. Yes or no? Then what he has done? 80 km for, I said that
4 hours, means I have written 4 hours. Yes. And then, yes, tell me. Stopped for half an hour for a particular purpose at filling station. Then after he resumed his speed and moving with what? For 1 hour. So I have written here it is 1 hour. Thereafter again he stopped his journey for half an hour. And then he moved 150 kilometers for 2 hours. The time taken is 2 hours. So that become what? 120, 320. That it is, I said that 0 plus 100 plus 0 plus 300. Yes. And that total time is what? 10 hours. And add किया तो हमने क्या मिला? 840 upon 10 cancel out 84 kilometer per hour. Is it okay? So this is the average speed. और ये किस condition में? When the speed and time is given. Yes or no? Distance is not given. Is it clear? So that it is okay. And the next question that we are watching, I said that average speed. अभी आपने average speed देखा S1 T1, S2 T2, S3 T3 dot 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 upon T1 plus T2 plus T3. And when the speed and what I said that time is given. But average speed, suppose speed is, time is not given. What is given? Distance and speed. What it is given? Distance and what it is given? तो इसका मतलब है कि different parts में D1 plus D2 plus D3 ये तो दिया हुआ है. Yes or not? But time is not given, and time equals to, all of you know that. Yes or no? Time equals to distance upon. दिमाग में तुरंत आएगा. So T1 means what? T2 means what? D2 by, and then T3 equals to D3 upon. जब बुक्स में ये सब कुछ लिखा रहता है ना, बोलते हैं भाई क्या बिना मतलब का एक ही फॉर्मूला लिखो ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. बच्चा ये सोचता है why it has given 3 formula. Yes or not? Sometimes in the books you know that some thinkers and their thought has been written that this thinker has given this philosophy related to this theory, और another thinker another, तो बोलते हैं एक ही thinker याद कर लो, दूसरे तीसरे thinker की याद करने की क्या जरूरत है ना? अरे समझ लो तीनों thinker को किसके perspective में कहा गया. Understood? So that is the most important. तो हम लोग generally I said that average speed एक ये formula ये हो सकता है, ये हो सकता है, but they are utilized in the different context. तो मैं क्या दूंगा? Distance दूंगा and all speed. Suppose I said that he moved 200 km with a speed of 50 km per hour. तो आप नीचे लिखोगे ऊपर में 200, below 200 upon 50. Understood it? So you will be able to get 4 hours. Is it okay to all of you? So लिखेंगे, write down. A person is traveling with a speed of 50 km per hour and covered a distance of 200 km covered a distance of, तो क्या लिखा आपने? साथ में करते रहे, 200 and below it is what? 200 upon 50. Make the topic so easy कि आपको लगे कि एक time distance speed is so easy topic. Yes? Then he stopped his journey for 1 hour due to technical problem in his car.
Then he stopped his journey due to technical problem in his car. So what is the distance covered? Yes, tell me. 0. और यहाँ पे directly time is given. Yes or not? Yes. Then he resumed his journey with a speed of 100 km per hour, 100 km per hour, and covered 300 km, and covered 300 km, and covered what? 300 km with a, tell me, is it okay? And in the last part of his journey, he moved with 80 km per hour. He moved with 80 km per hour and covered 160 km. And covered 160 km. Then find out average speed of the journey. Then find out एट्टी किलोमीटर पर आवर है ना. Is it okay? So in this question distance and speed is given, yes or not? What it is given? Distance and then we have to utilize this one, average speed. And what is the average speed? I said that first part of in a case of what? Distance and time. And another it is, I said that when the distance is not given but speed and time is given,
तो it will be what I said that distance will be d1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं s1 t1, d2 s2 t2, d3 s3 t3 like this upon t1 plus t2 plus t3. Another one we have seen, I said that when the distance and speeds are given but time is not given, so d1 plus d2 plus d3 upon t1 की जगह d1 upon s1. Yes, क्योंकि time formula is what? Distance upon speed. Is it okay? t2 की जगह d2 upon s2 and t3 की जगह d3 upon s3. Is it okay? We have seen this way. Another I said that we have to see average speed when the distance is constant. लिखेंगे another. Next level. Average speed when the distance is constant. Clear? So distance constant का मतलब है कि distance traveled in the 2 part of the journey or 3 part of the journey, जिसमें भी है distance traveled is same. Yes or not? So और इसमें ये ध्यान में रखेंगे distance traveled and distance constant and distance is not given. Distance is not given. Yes or not? वो आपको केवल स्पीड देगा. क्या देगा? स्पीड. अंडरस्टूड इट? क्लियर? सो राइट डाउन. अच्छा, मैं दिल्ली से आगरा जाऊं और आगरा से दिल्ली आऊं, डिस्टेंस सेम होगा? होगा. सो राइट डाउन. अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम दिल्ली टू आगरा with a speed of 60 km per hour, with a speed of 60 km per hour and returned back with a speed of 40 km per hour. Then what is the average speed of the journey? Then what is the average speed of the journey? किए? हाँ? हाथ में किए? उस ब्रांच में एक लड़की आती है, जितना भी वो कॉपी पे लिखेगी एंड वट एवर द एक्स्ट्रा कैलकुलेशन शी हैज टू डू शी विल डू एंड इट इज फिल्ड. Listen me carefully. If the distance is not given, do we know that exactly what is the distance of Delhi to Agra? हाँ? कितना होगा?
आप अपने तरफ से 190, 200, and then if the foreigners are not knowing, then what they will say? They can say 500, maybe 100, maybe any kilometer. Yes or not? So in this question you can take any distance. आपको simple यदि solve करना है तो you have to take the what I said that LCM of both the speed. क्या LCM क्या होगा 80 and 40 क्या क्या दिया था मैंने 60 और 40 का क्या होगा yes tell me what will be the LCM 120 and अभी हमने आपको बताया कि एवरेज स्पीड कैसे निकलता है yes tell me टोटल डिस्टेंस अपॉन d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 और जब डिस्टेंस और स्पीड दिया हो तो क्या लिखेंगे yes tell me d1 प्लस d2 प्लस डॉट डॉट अपॉन d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन यदि मुझे टाइम मिल जाए yes or not यही है ना t1 क्या लिख सकता हूं d1 अपॉन s1 d2 क्या लिख सकता t2 क्या लिख सकता हूं d2 अपॉन s2 जो लास्ट में अभी कराया मैंने और यहां पे मैंने दो ही डिस्टेंस दिया हुआ है तो व्हाट आर द स्पीड हैज बीन गिवन टेल मी इस क्वेश्चन में हमेशा इन दिस क्वेश्चन ऑलवेज डू व्हाट आई सेड दैट 60 and 40 LCM तो आप LCM कैसे निकालना है जैसे भी आप निकाल लें यस इसका क्या आएगा क्या आएगा 0 0 हटा दो आप 6 और 4 का निकाल लो आप यस आर नॉट इज इट ओके तो 6 और 4 का आ जाएगा 12 0 0 हटा दिए थे आपने तो और ऐसे हटा दिया तो 6 और 4 का 12 और 10 आपने बाहर रख दिया था 0 सो इट विल बिकम व्हाट 120 तो आप यहां लिखो यस 120 प्लस डिस्टेंस इज कांस्टेंट ना एट दिल्ली टू आगरा एंड आगरा टू दिल्ली डिस्टेंस इज व्हाट कांस्टेंट सो आप क्या लिखोगे 120 प्लस 120 what is the distance what is the distance 120 you can take any other distance also लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 120 क्या है 40 से भी डिविजिबल है एंड व्हाट इट इज LCM is always divisible by the given numbers yes or not so therefore I am taking that number और नीचे में क्या लिखूंगा 120 upon what is the speed दिल्ली टू आगरा 60 and then Agra to Delhi 120 and speed is what so 120 and 120 become what 240 and इससे कैंसिल किया तो मुझे क्या मिला 2 और यहां से इससे कैंसिल किया तो क्या मिला 3 5 and 5 से हमने किया तो क्या मिला यस 48 किलोमीटर पर आवर यस आना और कुछ बच्चे अच्छा एवरेज है तो 2 का एवरेज निकालना तो आसान है 40 प्लस 60 अपॉन 2 3 दे दूंगा तो 40 प्लस 60 प्लस 80 अपॉन 3 है ना रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट फाइंड आउट द एलसीएम ऐसे ही मैं 3 डिस्टेंस दे दूं और तीनों का अलग अलग हो नहीं तो इसका फॉर्मूला जाएगा ना बनाते हैं लोग तो फॉर्मूला कुछ और निकल जाता है फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है एंड दिस इज द इजीएस्ट वे दैट यू कैन डू एनी क्वेश्चन आपको 4 डिस्टेंस भी दे दिया जाए चारों का अलग अलग स्पीड तो आपको क्या करना है d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 और सारे डिस्टेंस क्या होंगे आपके एलसीएम किसके होंगे जो स्पीड से अंडरस्टूड और वो लिख ले और सेम स्पीड होगा सारा सॉरी ऑल आर व्हाट आई सेड द सेम डिस्टेंस और उसको करना क्या है d1 अपॉन s1 कैन यू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट अ पर्सन ट्रेवल्ड Mumbai to Pune with a speed of 60 km per hour and returned back with a speed of 90 km per hour. $60 और 90 का एलसीएम क्या होगा 180
returned back with a speed of what? 90 km per hour, then what is the average speed of the journey? Okay, shall I? प्लीज बच्चों डायरेक्ट मत कुछ किया करो, पहले लिखा करो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू व्हाट आई सेड दैट d1 प्लस d2, और इसमें हमेशा क्या होगा नीचे में d1 अपॉन s1 प्लस, और आपने किसका निकाला 60 और 90 का एलसीएम, तो आपने क्या ले लिया इस 10 में 10 साइड में ले लिया 6 और 9, 6 और 9 में 2 3, I said that 9, thereafter 3 1 3, and then you have taken 3 1 1, so 2 3 ja 6 3 ja 18, and 18 and this 10 180, so आपने क्या ले लिया 180 plus 180 upon, I said that 180 upon 60 kilometer, 180 upon what 90, so that become 360, and it is what cancel out 3, or it is cancel out 2, so it become 5, 3 plus 2 5, it is 72 kilometer per hour. कुछ बच्चे इस इसको डायरेक्टली यदि फॉर्मूला पे जाते हैं तो 2xy अपॉन x प्लस वाई भी करके कर सकते हैं, क्लियर, लेकिन मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा, क्लियर, हाँ क्या है? वो स्पीड है, आई सेड दैट यदि आप जैसे ले रहे हो ना, जैसे 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, इज इट ओके? आप इसी का जो ऐसे लोगे 2 into 60 into 90, do not do anyone, do not attempt it, 60 plus 90, so 2 into 60 into 90, and what we have seen 150, so 0 0 cancel, or 15 4 जा, so 2 4 जा 8 8 9 जा, बट मैं सजेस्ट कभी नहीं करूंगा क्योंकि ये यहां तक ही आएगा, अगले लेवल पे गए काम से, ये तो 2 के लिए होगा, 3 के लिए क्या करोगे? उसका भी फॉर्मूला है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz, 4 के लिए भी फॉर्मूला है 4xyz 4xyz u अपॉन दिस भगवान मालिक है, फिर तो गए भैंस पानी में। लेकिन आप ये जो है 4 भी दिया रहेगा तो वैसे ही आप 2 लाइन में कर लेंगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो आपको करना क्या है, सभी स्पीड्स का एलसीएम, अंडरस्टूड इट? सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A person traveled from A to B with a speed of 30 km per hour, B to C with a speed of 40 km per hour, and C to D with a speed of 60 km per hour, and the distance in those 3 parts of journey are, and distance in those 3 parts of the journey are same.
what it is? Same. Then find out average speed of the journey. Then find out the average speed of the total journey. थर्टी 40 60 का एलसीएम क्या होगा? 120. थ्री डिस्टेंस है ना, 120 प्लस 120 प्लस 120. Is it okay? So, what is the average speed? I said that three parts of the three journeys the, yes or not? And in those three journeys the speeds are different. d1 upon s1 plus, d2 upon s2 plus. yes, इससे लिखने से आप हमेशा इसकी क्या समझेंगे, इंपॉर्टेंस की क्या, हमें करना क्या है. एग्जाम में आप डायरेक्ट करिए, वहां पे आपको डायरेक्ट करने की जरूरत है, ये सर ना. यहाँ पे आपके पास गुड एंड सफिशिएंट टाइम्स है. आई सेड दैट इस केस में हमने बताया था डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने 30 40 एंड 60 इन तीनों का क्या निकालें स्टेल में एलसीएम. तो आपने पहले 10 निकाल दिया and then you will get what, LCM of 3 4 6 is 12 and 12 and 10 become what. So you have taken 120 plus and thereafter 120 upon what, S1, or it is 30, 120 upon S2 means 40 and 120 upon S3 means 60. So 4 3 2. So that become 360 upon what, 9, or 9 4 ja 36. So it become 40 kilometer per hour is the average speed of the journey. Is it okay? ऐसे ही आप 4 5 6 जितना भी हो तुरंत निकाल सकते हैं. There is no need of any formula. This is itself approach. Is it okay? So we have finished with what, average speed concept. Is it clear? Next one we are coming for train, relative speed. Which one? Relative speed. And relative speed में दो होता है. I said that one, it is, I said that moving in opposite direction but towards each other, towards each other. So moving in opposite direction, or we can say that towards each other, और एक होता है, I said that moving in same direction. Is it okay? Suppose that two friends है, उन्होंने दिल्ली, they left Delhi toward the same destination in the same parallel track. Understood? At the same time.
A has left here and B has left here, and दोनों की ट्रेन की स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे के बाद ये कितना मूव करेगा 100 किलोमीटर, and he will also move what, they are moving in the same direction. He is seeing this person B विंडो पे और ही इज वॉचिंग, 1 घंटे तक देख के बोर हो रहा है, न्यू फेस नजर नहीं आ रहा। फिर यहां अगेन द सेम पर्सन ऑन द विंडो ऑन द बोथ द साइड्स, बोर नहीं हो जाएंगे, दे आर गेटिंग मच मोर बोर। इसका मतलब रिलेटिवली दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशंस, यस और नॉट, यस और नॉट। 2 घंटे में 0 चेंज, यस और नॉट। I said the relative speed means relative distance change in the 2 hours 0, yes or not? Relative distance, relative change in position is what? तो what is the relative speed? 0. लेकिन यदि मैं बोलूं कि he is moving with what 120 km per hour and he is moving with the 100 km per hour, तो he will move in 1 hour how much 120 and he will move what 100 km। तो ये कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, रिलेटिव डिस्टेंस 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर कितने देर में 1 आवर में, यस और नॉट। सो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड 20 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अभी यही 2 घंटे में कितना चला जाएगा 240, और ये 2 घंटे में कितना चला जाएगा 200, 200 किलोमीटर। सो वन इज ट्रेवलिंग 240, अनदर इज ट्रेवलिंग व्हाट 200। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हुआ टेल मी 40 किलोमीटर, 240 माइनस 200 एंड इन हाउ मेनी आवर्स, अगेन मुझे क्या मिल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि रिलेटिव स्पीड कैसे पता चलेगा, स्पीड ऑफ द हायर माइनस स्पीड ऑफ द व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यस और नॉट। सो द रिलेटिव स्पीड इज व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज व्हाट स्पीड 1 माइनस स्पीड। So what is the relative speed S1 minus S2, got it? When they are moving in the same direction। और लाइफ में जितनी जो आसान सी चीज होती है ना, वही चीजें बहुत आसान बनाती हैं आगे वाली चीजों को, जो उसको बहुत अच्छे से समझता है। Understood? So what is the relative speed when they are moving in the same direction? S1 minus S2। I said that, suppose I said that, so moving in the same direction relative speed is what S1 minus, but suppose ये 2 पर्सन हैं जिनके बीच की दूरी है, सपोज करो दैट दे आर व्हाट इज ना 2000 किलोमीटर अवे, हाउ मच केला, and he is moving with what I said that 100 kilometer and he is moving with what 150 kilometer per hour। तो 1 घंटे में ये भाई साहब 100 आ गया, दोनों स्टार्ट किए सेम टाइम 150 किलोमीटर, ये भाई साहब कितना ट्रेवल कर लिए 150। अब ये कितना क्लोजर हो गए, 2000 में से ये 100 और ये 150, कितना 250, 250 किलोमीटर इन्होंने 1 घंटे में रिड्यूस कर दिया। आपने दोनों की बीच की दूरी हाउ मच डिक्रीज्ड 250, यस और नॉट, इन 1 आवर। Again another 1 hour में what is I said that he travel 150, he travel what, तो again 100, 200 और ये 300, तो इन्होंने 500 किलोमीटर क्या कर दिया decreased in how many hours। तो relatively they are coming faster, how much faster they are coming towards each other। तो एक दूसरे से जो क्लोजर आ रहे हैं what 250 किलोमीटर पर आवर, यस और नॉट। कभी कभी आप सुपर फास्ट ट्रेन से क्रॉस करते होंगे, आप बैठे हुए सुपर फास्ट ट्रेन में एंड वन ट्रेन हैज क्रॉस्ड विद वेरी हाई स्पीड, तो आपको लगता है कि अरे यार राजधानी हैज क्रॉस्ड। बचपन में ऐसे ही फीलिंग आती थी, विच ट्रेन हैज क्रॉस्ड, और वो तो पैसेंजर, दैट बिकॉज द रेड इन कलर, अर्लियर दैट राजधानी यूज्ड टू बी व्हाट कंप्लीटली रेड। तो फीलिंग आती थी कि राजधानी हैज क्रॉस्ड, बट राजधानी नहीं क्रॉस किया, वो पैसेंजर क्रॉस किया। आपकी इस ट्रेन की स्पीड 90 है और उसकी स्पीड 60 है,
तो जो क्रॉस करेगी 90 + 60 150 से, ऐसा नॉट, क्योंकि आप भी तो उसी तेज से निकल रहे हो और वो पीछे से ऐसे जा रहा है। सो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या देखेगी आपके कंपैरिजन में? रिलेटिव हमेशा आपस में कंपैरिजन करते हैं ना। यस, कभी आप यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा वाला रोड पे चले जाओ गाड़ी लेकर, 130 पे आपकी गाड़ी चल रही है, 130 40 पे दूसरे वाले की गाड़ी चल रही है, आप यहां पे 130 पे चला के दिखाओ, लगेगा सारी चीजें पीछे जा रही है फटाफट। वहां पे एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी लग रही है आसपास धीरे धीरे चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड व्हेन बोथ आर मूविंग, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका ना एक्सीलरेटर पर पैर दबा हुआ रहता है। मेरी वाइफ अभी जा रही थी 150 के आसपास पहुंचा दिया, मेरे दूसरे चलाने वाले को डर नहीं लगता है, लेकिन जो बैठा हुआ रहता है ना उसको डर लगता है। So I said, मतलब when both are moving in the same direction, it should be subtracted, and moving towards each other in opposite direction, it should be added. Yes or not? तो यहां पे क्या हो जाएगा? Relative speed when both are moving towards each other in opposite direction, relative speed will be what? लेकिन ये रिलेटिव स्पीड कब लिया जाता है? व्हेन वी टेक रिलेटिव स्पीड, जब एक मूव कर रहे हैं या दोनों मूव कर रहे हो? दोनों मूव कर रहे हो। यस और नॉट? यदि सपोज करो आप लोग नहीं मूव कर रहे, मैं ही मूव कर रहा हूं 50 km/h से, चाहे टुवर्ड्स मूव करूं चाहे अवे मूव करूं 50 ही रहेगी, है ना, क्योंकि आप तो जीरो है आप लोग। सो आई सेड दैट रिलेटिव स्पीड कब काउंट होगा? टेल मी, व्हेन द टू थिंग्स आर मूव। यस सर, मूविंग समझ में आ गया? चलिए, व्हाट्स योर नेम? दिगांत। यस, अमेया, है ना। I said that Digant and Amya, just suppose करो, just listen me carefully. इस स्टोरी की तरह देखो, do not I said that they left Delhi to Mumbai. This is clear na, relative speed S1 plus S2 when they are moving towards each other, and S1 minus S2 when they are moving in the same direction. Yes or not? So I said that Digant left Delhi in the morning at 7 AM. And his train speed is, I said that 80 km/h. Listen me. दिल्ली से ये किधर जा रहे हैं? टेल में मुंबई। And what time? Yes, tell me. 7 AM. और what is the speed? मूव करते हुए जा रहे हैं। And Amya left Delhi to Mumbai at, I said that 12 noon. इनकी गाड़ी ट्रेन कब चली? तो इसका मतलब अब दोनों की गाड़ी मूव कर रही है, तब हम लोग रिलेटिव स्पीड कब काउंट होगी? व्हेन बोथ आर मूविंग। और उस समय हम देखेंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। यस और नॉट? तो आई सेड दैट ही इज मूविंग ऑन 80 km/h and he is moving with what I said that 120 km/h. Yes, both directions in the same. लेकिन इस समय देखना है, इन्होंने 12 बजे और 7 बजे, तब तक ये 7 बजे से लेके दिगांत ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था 12 बजे तक? इस 80 की स्पीड से कितने देर बाद अमिया स्टार्टेड? यस टेल मी। आफ्टर 5 hours. तो ही ट्रेवल्ड फॉर 5 hours ना। तो आई सेड दैट आपने डिस्टेंस कितना निकाल लिया? 80 into 400 किलोमीटर यू आर अहेड। अब अमिया हैज टू कैच यू एंड डिक्रीज दिस डिस्टेंस। यस और नॉट? ये 400 के डिस्टेंस को अब क्या करना है? तो व्हाट इज द स्पीड? 120। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिगांत? 80। तो इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है? 40 every hour. What is the difference in the distance? 400. What is the difference in the distance? What is the difference? So every hour Amya will cover 40 km extra, 40 km extra, 40 km extra. इसका मतलब अगले 10 घंटे में he will catch. Yes or not? Yes or not? क्योंकि एक्स्ट्रा कितनी है कवरेज? 40 km in 1 hour. तो कितना टाइम लेंगे? यस, टाइम टेकन टू कैच, टाइम टेकन टू कैच। तो डिस्टेंस अपॉन क्या लिखूंगा मैं? रिलेटिव टाइम टेकन टू कैच व्हेन अमया विल बी एबल टू कैच दिगांत। तो दिगांत इज हाउ मच फार?
तुरंत क्वेश्चन आंसर दिखना चाहिए. 400 and what is the relative speed? Yes, tell me. 120 minus 80 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब 400 अपॉन 40 10 आवर्स. कितने बजे के बाद? 12 बजे के बाद. तो रात के 10 बजे ही विल बी एबल टू कैच. इज इट ओके? यस और नॉट? यस और नॉट? अब मैं आपसे पूछूंगा, अमेया रन फॉर हाउ मेनी आवर्स? 10 आवर्स. दिगांत ट्रेन रन फॉर हाउ मेनी आवर्स? पहले 5 आवर्स चल चुका था सुबह 7 बजे से ना, और उसके बाद 12 बजे के बाद दोनों ने 10 घंटे लिए. इसने 10 घंटे में कैच कर लिया. तो ही रन फॉर 15 आवर्स, ही रन फॉर व्हाट? ये तो समझ में आ गया ना? यस और नॉट? तो टाइम टेकन बाय अमेया 10 आवर्स टू रीच द सेम डिस्टेंस एंड देन दिगांत 15 आवर्स. इज इट ओके? यदि में पूछा जाएगा कितनी दूरी पर, एट व्हाट डिस्टेंस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली. आप दोनों में किसी का रख लो. व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिगांत? 80 किलोमीटर पर आवर. एंड व्हाट इज द टाइम? तो 1200 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली. यस और नॉट? यदि आप सोच रहे हैं नहीं दिगांत का ना निकाल के मैं डायरेक्टली किसका वैल्यू रखूं मैं, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट? अमेया आल्सो. तो डिस्टेंस क्या लिखोगे? यस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. इनकी स्पीड कितनी थी? 120. और कितने देर मूव किए थे? सो आप दोनों में से किसी का निकालिए. दे आर कैचिंग एट द पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली ना. इज इट ओके? अगेन आई सेड दैट, हमने क्या बोला? ध्यान से स्टोरी को समझे. हमने क्या बोला? यस, दिगांत लेफ्ट दिल्ली टू मुंबई एट 7 AM in the morning with a speed of 80 किलोमीटर पर आवर. अब हमें ये देखना है कि रिलेटिव स्पीड तभी आएगा जब अदर इज ऑल्सो मूविंग. एंड एट 12 noon I said that who started? Ameya with a speed of 120 kilometer per hour. And the question now, after how many hours and at what time Ameya will be able to catch the train of Digant? Second question, at what distance from Delhi? Is it okay? समझ में आ गया? Can you do the question fast? Write down. Person A left Delhi. Person A left Delhi to Mumbai. At 7 AM with a speed of 80 kilometer per hour, with a speed of, and at 11 AM तुरंत कान खुला. कितने डिफरेंस हो गए? व्हाट इज द टाइम डिस्टेंस? 4 hours. इसका मतलब कि पर्सन ए मूव फॉर व्हाट? 80 into 4 320. डिस्टेंस मिल गया. यस और नॉट? बस आपको क्या चाहिए? रिलेटिव स्पीड. यस और नॉट? तो हमने बोला क्या? At 11 AM person B started from Delhi to Mumbai with a speed of 130 kilometer per hour, with a speed of 130 kilometer per hour. Then find out first after how many hours and at what time, after how many hours and at what time B will be able to catch A. Second, at what distance? At what distance from Delhi?
So let us see, like I said, हमने बोला पर्सन ए ने कितने बजे चलना स्टार्ट किया था? 7 AM, यस और नॉट? पर्सन बी स्टार्टेड एट, तो इसका मतलब ही हैज मूव्ड मोर डिस्टेंसेस, और इसकी स्पीड क्या थी? 80 किलोमीटर पर आवर। तो कितने देर चला जाता ये? 4 आवर्स। 11 बजे तक यहां पहुंच गया, तो 80 इंटू वट? 4, 320। सो डिस्टेंस कितना मिल गया? टेल मी, दोनों के बीच में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? 320 किलोमीटर। सो टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, यहां पर तो यही होगा ना, तो टाइम मीन्स आई सेड दैट डिस्टेंस इज 320 एंड रिलेटिव स्पीड इज व्हाट? 120 माइनस, मैंने चेंज कर दिया है, व्हाट आई सेड दैट 130 की जगह क्या लिखना है आपको? 120। So I said that 320 upon 40 cancel out, what you got? 8 hours. Who has taken this 8 hours? B has taken. Who has taken? B. और B कितने बजे चला था? 11 बजे। 11 बजे के बाद 8 घंटे ना, तो what is the time? At what time they will meet? 7 PM on the same day. 7 PM on the, तो 11 बजे से 8 घंटा। Second question, is it okay to all of you? Yes. And उसके बाद हमने बोला yes tell me, डिस्टेंस और किसका लेना चाहते हैं आप, ये मुझे बताएं, ए का या बी का? बी। तो यदि बी के अनुसार से लेंगे तो बी का क्या था स्पीड? 120 किलोमीटर पर आवर, एंड कितने देर चला था बी? 8 आवर्स के लिए, तो 12 बैठ जा 960 kilometer. Is it okay? 12 बैठ जाओ। And again I am telling you, those who are weak and not feeling fast and comfortability, they can join for the next, and only by writing an application. Understood? Those topics. So D equals to 120 into 8, 960 kilometer. Completely okay in your mind? Yes. और आप दूसरे से भी निकाल सकते हैं। ए का स्पीड क्या था? 80। पहले वो 4 घंटा चला, फिर उसके बाद 11 बजे से लेकर 8 घंटे, 12 घंटा, 12 hours. So again it is 960. Yes or not? Ready for the next? Or this time question finishes, answer should be ready. आपको ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन ने क्या स्पीड थी और कितने देर आगे चला। Yes or not? और वो टाइम डिफरेंस से पता चल जाता है। Is it okay? Write down. A person moved Delhi to Kolkata in the morning at 8 AM with a speed of 100 kilometer per hour. Is it okay? What is the time? 8 AM with a speed of what? 100 kilometer per hour. Another person also left Delhi to Kolkata with a speed of 150 kilometer per hour, with a speed of 150 kilometer per hour at 11 AM. At 11 AM. What is the time difference? तो पहले वाले ने कितना मूव कर लिया? 100 into 3. I said at 11 AM. Then first question, after how many hours and at what time second person will catch first person? Second, at what distance?
कुछ भी नहीं रटना, आप देखना कि अच्छा वो 300 आगे चला गया, ये फीलिंग आनी चाहिए, पिक्चर में दिखनी चाहिए, अच्छा उसकी ट्रेन 300 किलोमीटर आगे आ गई, 100 इंटू 3, क्योंकि वो 3 घंटे लेट से दूसरी ट्रेन चली है। लेट से क्या, आपने टाइम से चली है लेकिन 3 घंटे लेटर ऑन। एंड व्हाट इज द स्पीड इट हैज बीन गिवन, एक की 150 है दूसरे की 100 है, तो रिलेटिव स्पीड विल बी व्हाट, 150 माइनस 100। 80 कहां से, पिछले वाले में लगे रहोगे क्या? लोकेश नाम है ना, लोकेश्वर चतुर्वेदी। What is the distance? Yes, tell me. एक की क्या स्पीड है? Yes, tell me. One person की 100 किलोमीटर पर आवर एंड कितने बजे चला था ये? 8 AM। और हमें तुरंत आंसर पता चलेगा जैसे ही सेकंड की बताई जाएगी। यस और नॉट? इसका टाइम क्या बोला गया? 11 AM। फटाफट 3 घंटे का डिफरेंस। यस और नॉट? 3 hours डिफरेंस। मीन्स आई सेड दैट ही मूव्ड 100 into 3, 300 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली। एंड देन इसकी स्पीड क्या बताई गई? 150। तो डिस्टेंस तो मुझे मिल गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन देम? 300 किलोमीटर। एंड टाइम मीन्स व्हाट? डिस्टेंस अपॉन, एंड डिस्टेंस इज 300 एंड रिलेटिव स्पीड इज 150 माइनस 100। सो 300 अपॉन 50 कैंसिल आउट 6 hours। इसका मतलब कितने बजे के बाद? आफ्टर 11 AM। आफ्टर 11 बजे के बाद 6 घंटे कितने होंगे? सो एट 5 PM he will be able to catch। and second at what distance? आप डिस्टेंस यदि आप इसके अनुसार से लेना चाहते हो तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड कितनी है? 150 किलोमीटर। और ये कितने आवर्स मूव किया? 6 hours। सो 900। और यदि आप डिस्टेंस इसके अनुसार से लेना चाहते थे, हिज स्पीड इज व्हाट? 100। ही मूव्ड अर्लियर 3 hours, 8 से 11, फिर 11 से लेकर 6 घंटे, 9 hours, 900 किलोमीटर। इज इट ओके? कंफर्टेबल? चलिए राइट डाउन। एंड you know that when you have to convert kilometer per hour into meter per second, तो आपको क्या करना है? 36 किलोमीटर पर आवर है तो you have to convert into what? Meter per second। that is I said that 5 by 18। is it okay? so 18 2s are 36 means what? 10 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा मत सोचना 10 मीटर पर सेकंड छोटा फिगर है। अंडरस्टूड? इसी तरीके से चोर और पुलिस के बीच में भी होता है। पुलिस वाला पीछे रहता है एंड थीफ इज अहेड। यस और नॉट? हु इज बैक साइड? पुलिस। एंड पुलिस स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन थीफ, अदरवाइज ही विल नेवर कैच। यस? अब आपको यही सेम कंसेप्ट यूज करना है, लेकिन कब करना है? व्हेन ही इज बोथ आर मूविंग। ध्यान रखिएगा टाइम डिफरेंस। यस और नॉट? हम लोग टाइम डिफरेंस कैसे निकाल रहे थे? 8 AM एंड नॉट 11 AM। अब चलो सोचो कि चोर 7:15 में भागने लगा और पुलिस भागना स्टार्ट किया 7:18। तो ये 3 मिनट जो मिला, तो 3 मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड्स में। तो 180 सेकंड्स, क्योंकि स्पीड किस में दिया जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो यदि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो वो कितना आगे बढ़ गया? 1800। यस और नॉट? 10 meter per second into 1800, 10 meter per second into, again thief started running at 7:15 7:15 and police started running at 7:18। तो 3 मिनट्स का डिफरेंस। फटाफट आपको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड्स में। फिर मैं पूछूंगा कितने बजे पकड़ा, तो वो टाइम निकाल लेना सेकंड्स को, निकल जाएगा ना सेकंड्स। सेकंड जितने निकले, मान लो 300 सेकंड निकला तो 300 मीन्स 5 मिनट। पुलिस कितने बजे भागना स्टार्ट करी थी? 7:18। तो उसके बाद 5 मिनट ऐड कर दोगे। अरे पीछे वाले पे ऐड करते हो ना आप,
जो भागना स्टार्ट किया, तो 718 + 5 बिकम 723. इज इट ओके? और कितना डिस्टेंस आप दोनों में से देख लो, कौन दोनों का टाइम पता होना चाहिए और उतना ही निकाल देना. लिखेंगे ये जो स्टोरी है यूपीएससी ऐसे पूछेगा, लेकिन उस स्टोरी को केवल समझने की जरूरत है. यदि ये स्टोरी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो भी अच्छी बात है. आपको लेना क्या है, कब पुलिस भाग रहा है, कब चोर भाग रहा है. अंडरस्टूड इट? लिखिएगा. अ थीफ एंटर्ड इन मुकेश अंबानीज हाउस. क्या यहाँ पे घुसेगा कुछ नहीं मिलेगा, चेयर मिलेंगे, है ना. चोर कहीं भी घुस सकता है, यू नो दैट. ही कैन एंटर एनीवेयर. उसके लिए कोई ताला तो इसलिए लगा रहता है, बेटा मत घुसो, खुलेआम नहीं है. इट इज वन मोरली दैट ही फाउंड दैट हु इज वेरी वीक इन द सिक्योरिटी, वहां पे लोग अटैक करते हैं. सो आई सेड, कहां पे बोला मैंने? A thief entered in मुकेश अंबानीज हाउस at 7 AM. सब लोग सो रहे थे. And reached. ये कहानी वहां पे बनाए रहेगी, सब आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं, ठीक है ना. मतलब ये घूमते रहो, लेकिन इसी में थोड़ा सा और भी पकड़ेंगे टाइम. And at 7:05 reached at locker house. At 7:05 reached. ये आपकी लॉजिक है, समझ में आ रहे हैं. एट 7:05, 7 past 5 minutes, यस or not? Reached locker house and he took 5 minutes extra to open the locker. टाइम कितना हो गया? यस. इन द ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट में आफ्टर ओपनिंग द लॉकर एन अलार्म विल रिंगिंग आफ्टर 10 minutes. An alarm will ringing after. अब थीफ को क्या पास कितना टाइम बचा हुआ है? 10 मिनट. यस और नॉट? 7:10 पे उसने खोल लिया. अब ये यहां पे आपका लॉजिक यूज होगा. यस और नॉट? पुलिस कब उसके पीछे भागेगी? 7:20 पर. ये समझ में आ गया आपको? पुलिस उसके पीछे कब भागेगी? 7:20. अंडरस्टूड इट? क्योंकि अलार्म विल रिंग एट 10 minutes आफ्टर. तो ये सब स्टोरी को भी समझना आपको जरूरी है. अंडरस्टूड इट? तो 7:20 पे पुलिस भागेगी, लेकिन अभी इसके पास 10 मिनट बाकी है. देखेंगे. इन द नेक्स्ट 5 minutes he is able to come out of the premise. इसका मतलब टाइम कितना हो गया? 7:15. यस और नॉट? एंड 7:15 एंड स्टार्टेड हिज. अब कितना टाइम बचा हुआ है जो पुलिस दौड़ेगी? अब इसके पास 5 मिनट. इसका मतलब 300 सेकंड है जो आगे बढ़ना है इसे. और ऑलरेडी पुलिस का टाइम भी बता चुका. 7:15 पे भाग रही. एंड ही स्टार्टेड हिज बाइक विद 20 meter per second. Started his bike with 20 meter per second. And police also started chasing him just after the alarm, just after the, yes, just after the alarm. Is it okay? Police started chasing him just after the alarm. Is 7:20. Then with a speed of 30 meter per second, with a speed of then first question, after how many
seconds or minutes, police will be able to catch thief. After how many minutes or seconds, police will be able to catch thief, and at what distance from Mukesh Ambani's house? 5 मिनट का मतलब क्या है? थीफ कितने बजे चल दौड़ना स्टार्ट किया? ये तो आपकी लॉजिक है, इसकी आपकी इंग्लिश क्या है? 7:15 पर, और पुलिस वाला 7:20. इज इट ओके? तो ही इज गेटिंग 5 मिनट्स एक्स्ट्रा टू मूव, और इसकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड. इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड. सिंपल. और टाइम डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपका? 5 मिनट मिस 5 into 60, 300 सेकेंड्स. यस. चोर के पास इतना ही है कि वो कितना दूर आगे बढ़ सकता है. यस. यस आर नॉट? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये टेल मी. इसकी स्पीड 20 है. स्पीड इनटू टाइम ना. डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना है? 300. सो ही इज एबल टू मूव हाउ मच फार? 6000 मीटर. और अब इस समय पुलिस वाला एक्टिव हो गया. यस आर नॉट? क्या इसकी दूरबीन की आईज को दिख रहा है दूर तक? 6 किलोमीटर अहेड पुलिस थी. सो टाइम कैसे निकलता है? टेल मी. डिस्टेंस अपॉन व्हाट? और जब ये स्टार्ट किया तो कितना दूर था? ये निकाल रहे थे ना, डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन बोथ आर मूविंग. रिलेटिव स्पीड विल कम इनटू प्ले व्हेन बोथ आर मूविंग. अभी तक तो 7:20 टिल 7:20 हु इज मूविंग? Only thief. And now 7:20 पे he started moving. Yes or not? And now the relative speed comes, means at what is the distance between them? And what is the relative speed? 30 minus 20, and it became what? 6000 upon 10. Cancel out 600 seconds. What is the meaning of 600 seconds? 10 minutes. इसका मतलब 7:30 पे पुलिस वाला पकड़ लेगा उसको. इतना फास्ट और एफिशिएंट. हाँ, अंडरस्टूड? 30 मीटर पर सेकंड का मतलब भी होता है 108 किलोमीटर पर आवर. देखो पता नहीं कैसे तेज भाग रहा होगा. फर्स्ट पार्ट. इज इट क्लियर ना? फर्स्ट पार्ट सिंपल. टाइम 600 सेकेंड्स. डिस्टेंस अपॉन, आई सेड दैट डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड. अब सेकंड है कि डिस्टेंस निकालना है. आप थीफ वाले से निकालना चाहते हो या पुलिस वाले से? कहीं से पुलिस वाले से निकालोगे आप तो वहां पे स्पीड इनटू टाइम. और व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पुलिस वाला? 30. एंड कितना टाइम लिया उसने? 600 सेकेंड्स. इसका मतलब 18,000 मीटर. सो 18 किलोमीटर फार फ्रॉम मुकेश अंबानी हाउस. यदि आप थीफ वाले से लोगे स्पीड इनटू टाइम, तो थीफ वाले का पहले 5 मिनट पहले वो 300 सेकेंड्स पहले ही मूव कर चुका था 5 मिनट. अब कितना है? 600. यस आर नॉट? तो 300 सेकेंड ये है, 900 सेकेंड. और इसकी स्पीड क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड. तो 20 इंटू व्हाट? सो फ्रॉम अंबानीज हाउस. यस आर नॉट? अच्छा, ऐसा भी अलार्म होता है कि 10 मिनट के बाद
अलार्म बजे चोरी हो जाए और 10 मिनट के बाद, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपकी लॉजिक है वो पकड़ी जा सके, कैसी लॉजिक है। अंडरस्टूड इट, गॉट इट, यस, समझ में आ गया। दोज वर्ड जिसकी ट्रेन पीछे से चल रही है और एक ट्रेन आगे पहुंच चुकी है, अंडरस्टूड, चाहे एक ट्रेन है या चोर और सिपाही, बोथ द क्वेश्चंस आर सेम। और ये कौन सा हम लोगों ने टॉपिक किया, रिलेटिव स्पीड इज, और उसमें मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अंडरस्टूड इट। एंड थोड़ा सा yesterday we are doing with, I said, time distance speed and train questions we are doing, yes, and we have completed with the train question in the form of when they are moving in the same direction, yes or not, and we have to see, like I said, that when they are moving in the opposite direction, yes, and again आपको ये देखना है, in that question write down one question, Ram left Delhi to Hyderabad in the morning at 8 a.m. in the morning at 8 a.m. with a speed of 80 km per hour, with a speed of, and Shyam left Hyderabad to Delhi which is 2000 kilometer far, at 1 p.m. with a speed of ध्यान से सुने, I said that Ram has left Delhi to Hyderabad at what time? 8 a.m. And at that time Shyam is moving? No. Relative speed will come into play when both are moving. And after 5 hours, and what is the difference between Hyderabad and Delhi? 2000 kilometer. And after 5 hours, a portion from Shyam that is started moving from Hyderabad. इसका मतलब है कि till 1 p.m. only who is moving? Ram is moving. So till 1 p.m. for 5 hours he has moved what? 400 kilometer. So what is the now distance between them? 1600 kilometer. So what is the distance between them? What is the distance between them? Yes, tell me now. और ये 1600 कैसे मिला? Yes, tell me. 2000 minus 400, क्योंकि 80 into 5 वो मूव किया था. Yes, and the distance left is what? 1600. And at that time, who was moving? Yes, tell me. Only Ram was moving, yes or not? Now Ram and Shyam both are moving towards each other. Ram is moving with the 80 kilometer and Shyam is from the Hyderabad with, and both are moving towards each other, means relative speed will be added, and that will become 120 plus what? 80. So 1600 upon, yes, 200 cancel out, I got what? लेकिन 8 hours कब? After Shyam has started 1 p.m. Yes or not? It means 9 p.m. पे they will be able to meet. Yes. अब ये देखना है कि दोनों ने कितने घंटे चले. तो Ram has started from Delhi and Shyam has started from Hyderabad. कितने घंटे चले? How many hours they have run? And what was the speed? So you will be able to find that at what distance from Hyderabad and at what distance from Delhi they met. Is it okay? समझ में आया?
तो सिंपल है, दोनों की स्पीड पता होनी चाहिए, दोनों की टाइम ट्रेवलिंग. यस और नॉट? राम हैज स्टार्टेड एट व्हाट? 8 AM. तो पहले ही वो 5 hours मूव कर चुका है. आफ्टर दैट देयर इज एन 8 hours, so 13 hours, and speed is what? 80 km/h. And Syam has started, I said that, from Hyderabad with the 120 km/h, and he has moved only for what? He has moved only for what? 8 hours. तो सिंपली आप दोनों तरफ से डिस्टेंस निकाल देंगे. सो लिखेंगे, I said, तो क्या बोला था मैंने? स्पीड दे चुका हूं मैं, 120 km/h. Then find out at what time, at after how many hours they will be able to meet. At what time, after how many hours they will be able to meet. Is it okay? They will be able to meet. Second question, at what distance from Delhi and Hyderabad they will meet. At what distance from Delhi and Hyderabad they will meet. पहले तो टाइम निकालेंगे. एंड टाइम कैसे होता है? यस टेल मी. डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड. डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन रिलेटिव स्पीड. Distance between them is what? They are moving towards each other. Relative speed will be get added. And what is the distance between them? पहले भी हम लोग डिस्टेंस बिटवीन देम ही निकालते थे. पिछले क्वेश्चन में व्हेन दे आर मूविंग, तो यहां से यहां तक इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? ये दिख रहे थे. तो पहले क्वेश्चन में दिखता था 400 hours, 400 किलोमीटर. अब यहां से ये 400 किलोमीटर मूव कर चुका है दिल्ली से, लेकिन एक हैदराबाद से स्टार्ट हुआ है. तो इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है? 2000 माइनस. इसी गैप को तो क्या करना है? फिनिश. दिस गैप हैज टू बी व्हाट आई सेड दैट. पहले भी हम लोग रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड ले रहे थे. राइट नाउ अगेन वी हैव टू टेक व्हाट? रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस. He moved for 13 hours ना. राम कितने देर के लिए चला? उसकी ट्रेन कितने देर चली? पहले सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक 5, उसके बाद 8 घंटा, तो 13 hours. So I said that this is your Delhi, and Delhi से who started moving? Ram.
और ये सुबह कितने बजे चला? एंड दिस इज योर व्हाट आई सेड दैट हैदराबाद, एंड हैदराबाद से हु स्टार्टेड? आई सेड दैट श्याम, और ही स्टार्टेड एट व्हाट 1 PM. तो इसका मतलब till 8 AM to 1 PM he is only moving. So for 5 hours he moved single. 80 into 5, 400. Yes or not? और टाइम कैसे निकलता है? इट इज रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? इनके बीच में अब डिस्टेंस कितना बचा हुआ है? इट्स टोटल डिस्टेंस इज 2000 किलोमीटर. So this distance left is what? 2000 minus. So 1600 kilometer left. So 1600 upon what? Relative speed is, इसकी speed what? एक की 120, एक की what? 80. And when they are moving towards each other, the speed will get add up. And then I said that 1600 upon 200 cancel out, it become what? 8 hours. After 1 PM. ये स्टोरी कब स्टार्ट हुई? आफ्टर 1 PM. आफ्टर 1 PM they are taking 8 hours. So the first answer there will meet after 8 hours, but time will be what? Timing will be 9 PM. Second question I said that distance from Delhi, if I said that कहाँ पे मिले? तो दिल्ली से who started? राम. तो डिस्टेंस यदि हमें निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द राम? 80. और कितने आवर्स के लिए मूव किया? पहले वो 5 आवर्स एंड देन टिल 9 PM अगेन 8 घंटा. सो आई सेड दैट 13 आवर्स, सो 1040 किलोमीटर. एंड फ्रॉम हैदराबाद आप डायरेक्टली आप 2000 माइनस 1040 कर लेंगे, 960 इट विल कम. अदरवाइज डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट विल डू? स्पीड इनटू टाइम. श्याम वहां से मूव किया था, श्याम की स्पीड क्या थी? 120. और कितने आवर्स के लिए श्याम के लिए मूव किया था? 8 आवर्स के लिए, 960. या तो इसको आप सीधे 2000 माइनस 1040 भी करते, क्योंकि एक तरफ से डिस्टेंस पता चल गया तो टोटल डिस्टेंस तो 2000 था. दैट डायरेक्टली बाय सब्ट्रैक्टिंग यू कैन डू. एक तरफ से डिस्टेंस पता चल जाए, दूसरी तरफ से आपको यू कैन बी एबल टू डू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट. इज इट ओके? क्लियर? Write down the next. Understood it? लिखेंगे मोहन left Mumbai to Bengaluru which is 1600 kilometer far. Mumbai to Bengaluru, which is 1600 kilometer far, with a speed of 60 kilometer per hour. How much? 60 kilometer per hour. कितने बजे चला? With the speed of 60 kilometer per hour at 6 AM in the morning. Six AM in the clear? And Rahim left Bengaluru to Mumbai with a speed of 64 kilometer per hour at 12 noon. Is it okay? तो कौन मूव कर रहा था? यस टेल मी.
ओनली मोहन कितने घंटे के लिए मूव करते रहा? तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और वो टोटल डिस्टेंस में आप क्या करेंगे? माइनस. यस, यस or not? So write down after how many hours and at what time they will meet. After how many hours and at what time they will meet? Second question, at what distance from Delhi, sorry, at what distance from Mumbai and Bengaluru? So what is the relative distance? 1600 minus 60 into 6, यही होगा ना रिलेटिव डिस्टेंस, क्योंकि 6 घंटे के लिए तो वो मूव करते रहा. यस और नॉट? विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई? 1240. सिक्सटीन टू 16 जो चला उसने वो 60 किलोमीटर से चल रहा था ना. He was moving the 60 kilometer per hour and run for 16 hours. So Mohan left, I said that, सभी से हो गया क्वेश्चन. Mohan left, I said, Mumbai to Bengaluru, and the timing was, I said, that 6 a.m. and then he left. Mohan means another is which one? Rahim. He left at what? 12 noon, that is 12 p.m. After that, I said,
ही वॉज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 6 घंटे के लिए इसने अपने आप ही मूव करता रहा, यस और नॉट? सो व्हाट इज द रिलेटिव डिस्टेंस आई सेड? 1600 minus 60 into, and relative speed is I said that 60 और इसकी क्या थी 64, is it okay? And that become yes 1600 minus 360 divided by 124, so 1240 upon 124 आता है रिलेटिव डिस्टेंस, क्योंकि दोनों सेमी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से, वहां से अब दूर से नहीं आ रहे थे, तो उनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाती थी 60 into 6। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूर से आ रहे हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कल भी बताया था मैंने। सो बीच की दूरी अब क्या होती है, द डिस्टेंस इन बिटवीन देम इज व्हाट, रिलेटिव डिस्टेंस 1240। तो जितना भी निकले आपको 60 into 6 वो टोटल डिस्टेंस में से आप माइनस करते रहे। इज इट ओके? दिस इज आई सेड दैट 10 hours, बट आफ्टर व्हाट 12 noon 12 PM। सो टाइमिंग जब वो आपस में मिलेंगे, वो टाइमिंग क्या होगी, 12 से 10 घंटे आगे, 10 PM in the night। Second, at what distance from Delhi? So distance will be yes, क्या डिस्टेंस होगा 60, और ये कितने देर के लिए चला, यस टेल मी? 6 hours and 10 hours, yes or not? 16 hours, so 16 6 and 96, so 960। so बेंगलुरु, सॉरी दिल्ली बोल रहा हूँ मैं, मुंबई, और बेंगलुरु से 1600 माइनस 960 लिख लूंगा, और क्या आ जाएगा आपका 640 किलोमीटर, यस और नॉट? सो कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक? वी हैव डन विद, आई सेड दैट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड वी हैव डन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेटिव स्पीड। शैल आई रिमूव दिस? Write down, a portion started with a speed of 200 kilometer from 200 kilometer per hour from Kanyakumari towards Himalayas, and the distance of Kanyakumari to foothills of the Himalaya is 2800 kilometer. And distance of Kanyakumari to foothills of Himalaya is 2800 kilometer. And width of Himalayas is 400 kilometer. And width of Himalaya is 400 kilometer. Is it okay? Then how much time he will take to cross Himalayas? First, time. Time equals to what? Do it fast. अब इतने आसान क्वेश्चन को करने में आप टाइम लगा रहे हो। हो गया?
यस, अरे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? हाँ, नहीं बनेगा, उसी से तो बनेगा, और किससे बनेगा? हाँ। अरे टाइम निकालो। सोच रहे सर बोल दिए नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन दे रहे इतना इजी है। कुछ बच्चे तो ऐसी सोच में पड़ गए होंगे। टाइम इक्वल्स टू क्या दे रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या कुछ तो है। क्या ये फैक्ट्स है या नहीं है? फिलहाल ये क्वेश्चन है। हाँ, वो 200 किलोमीटर पर आवर, तो जब मूव करने के लिए बोल दिया, उसका वेरिएबल स्पीड तो बोला नहीं मैंने। चलिए, जिन्होंने 16 आवर्स निकाल रखा है उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। क्रॉस द हिमालयास का मतलब ओनली हिमालयास को क्रॉस करना होता है। आप आंसर निकाल रहे हो क्या? पूरा हिंदुस्तान क्रॉस करने का, है ना? यदि क्रॉस द हिमालयास का मतलब, यस टेल मी, only 400 kilometer, t equals to distance upon speed, and what distance that he has to travel, tell me? 400, and 400 upon, तो इस क्वेश्चन का जो अगला लेवल है वो है क्रॉस करना, अंडरस्टूड? एंड क्रॉस में ओनली आपको उसी को क्रॉस करना होता है। आप पूरा हिंदुस्तान के विश्व घूमकर आओ, होल अर्थ, how much time you will take to cross the Himalayas? 2 hours. If your speed is 200 kilometer per hour. ये क्वेश्चन इसलिए देता हूं कि आप लोग ये समझ सके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस। क्लियर? यदि मैं बोलूं कि मेरी ट्रेन, आई सेड दैट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म है, एंड हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग 1 किलोमीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो बच्चा पहले बोलेगा 50 प्लस 1 किलोमीटर, 51 किलोमीटर, and divided by speed. And cross the platform means only cross the platform. Yes or not? Is it clear to you? So cross का मतलब, this answer will be, I said that time equals to distance upon speed means which distance? 400 upon which one? The answer is 2 hours. Is it okay? I said in this cross question there will be, I said that a question will be there like I said that cross a pole, cross a person standing, or cross a running person. Understood?
को क्रॉस करना है, या a portion standing portion को he has to cross, or a running portion को, and one train has to cross a bridge to cross a platform or anything, or cross another moving train. Understood? Bridge, platform, और ए मूविंग ट्रेन, यस और नॉट? इसमें दो चीजें हो सकती हैं. टाइम इक्वल्स टू व्हाट आई सेड दैट फर्स्ट डिस्टेंस और s1 plus s2 or s1 minus s1 plus s2 when they are moving towards each other, and s1 minus s2 when moving there in the, yes or not? And here it can be also, I said that t equals to, I said that इसमें d1 plus d2, s1 plus s2 or s1 minus s2. Is it okay? Let's start with this question. Write down. Train 100 meter. Train length 300 meter, moving with 20 meter per second. A train length 300 meter, moving with 20 meter per second, will take how much time? Take how much time to cross a platform, to cross a pole, to cross a pole. Yes, very easy question I have given. Suppose करो कि ये पोल है. I said that, और इस क्वेश्चन में ट्विस्ट करने के लिए यूपीएससी ये भी बोल सकता था, यस ये ट्रेन जो है 20 किलोमीटर दूर है. इस 20 किलोमीटर से कोई फर्क पड़ेगा? यस, नथिंग. मतलब हमें केवल क्रॉस किसको करना है? तो डिस्टेंस इन बिटवीन डजंट मैटर, यस और नॉट? अब वो घूमते फिरते रुकते उगते कुछ भी करे, डजंट मैटर. व्हेन ही कम नियर हियर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ट्रेन? 300 मीटर. अब ये यहां आई, क्या अभी इसने क्रॉस किया? नहीं. क्या किया? नहीं, अभी भी नहीं किया. नाउ ही क्रॉस्ड. क्रॉस करने के लिए उसे कितना लेंथ क्रॉस करना पड़ रहा था? इट्स ऑन लेंथ, यस और नॉट? तो डिस्टेंस विल बी व्हाट? लेंथ. तो यहां पे क्या आंसर निकलेगा? इस टेल मी. टाइम इक्वल्स टू व्हाट? ट्रेन लेंथ अपॉन व्हाट? और एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यस और नॉट? एंड देन इट इज, आई सेड दैट स्पीड ऑफ द ट्रेन, and the train length is what I said that 300 meter, and this is, I said, tell me, upon, cancel करोगे तो क्या मिलेगा? 15 second, yes or no? Got it? He'll cross in how much second? Write down another question. क्या स्टैंडिंग बॉय के लिए भी सेम ऐसा ही होगा? स्टैंडिंग बॉय के लिए भी क्या होगा? सेम. देखिए, क्योंकि स्टैंडिंग बॉय भी खड़ा है तो इसको क्रॉस करने के लिए इसे क्या होना चाहिए? ही हैज टू क्रॉस इट्स, या मूविंग बॉय हो मूविंग पर्सन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ट्रेन को क्रॉस करने के लिए क्या होना होगा? इट्स ओन लेंथ, क्योंकि इसके लेंथ को क्या मानूंगा मैं? नेग्लिजिबल. यस, सो राइट डाउन. अ ट्रेन लेंथ 300 मीटर, moving with 20 मीटर पर सेकेंड. अच्छी स्पीड होती है 20 मीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर पर आवर. मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड will take how much time to cross a person
standing on the platform. To cross a person standing on the platform. कर लिया आपने? It will be the same like I this. वो standing person हो या पोल हो, दोनों एक ही बिहेव करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. Yes or no? They are negligible considered to be. So standing portion के केस में भी he has to cross the distance of its own length. Train has to cross. Is it okay? Now अब पर्सन जो है मूव कर रहा है, तो आंसर 15 सेकेंड सबका. अब पर्सन मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ट्रेन, यस और नॉट, लेकिन प्लेटफॉर्म पे, ट्रैक में नहीं दौड़ रहा है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. टुवर्ड्स द ट्रेन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन. यस, देन हाउ मच टाइम दिस ट्रेन विल टेक टू क्रॉस दिस पर्सन, और उसकी स्पीड दी रहेगी. कर लेंगे. तो नीचे क्या आ जाएगा? S1 प्लस, चलिए लिखेंगे. A train length 300 meter moving with 30 meter per second. Moving will take how much time to cross? Who is running with 10 meter per second towards the train on the platform. Towards the train on the platform. यस. सो अभी भी पर्सन है, तो इसका मतलब है कि ट्रेन हैज टू क्रॉस इट्स ओन लेंथ. सबका आ गया 300 अपॉन व्हाट? 20 प्लस 10 30. दैट मीन्स इट विल टेक हाउ मच? 10 सेकेंड्स टू क्रॉस. तो इस केस में क्या हो जाएगा? S1 प्लस, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड इट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन. S1 प्लस length of the train he has to cross means 300 meter, and that is a 20 plus 10, 300 upon what? 30. So 10 second he will take. Yes. Now अब person क्या करेगा? They are moving on the platform in the same direction of, इसका मतलब towards the train नहीं, in the same direction of movement of train. Yes or not? So लिखेंगे a train length 300 meter, a train length moving with 20 meter per second, moving with, will take how much time to cross a person running with, to cross a person running with 10 meter per second in the same direction of the train movement on the platform.
Clear? So they are moving in the same direction. इसका मतलब क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन h1 माइनस h2. की स्पीड क्या आती है? 20 मीटर पर सेकेंड. और पर्सन को क्रॉस करने के लिए चाहे मूव करे ना करे, उसको क्या अपनी लेंथ को क्रॉस करना होगा ट्रेन को. एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. मींस आई सेड दैट सेम डायरेक्शन मींस सब्ट्रैक्टेड. सो द 300 अपॉन 20 minus 10, that becomes what? 10. Cancel out. He will take what? 30 seconds. Is it okay? Clear? और कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि if the question has been asked to cross, दो ट्रेन है, एक की लेंथ 200 है, मूविंग विद आई सेड दैट 10 मीटर पर सेकेंड. कितना टाइम लेगा पोल को क्रॉस करने में? 200 अपॉन 10, 20 सेकेंड्स. एक दूसरी ट्रेन है, उसकी लेंथ है 450 मीटर एंड इसकी स्पीड है आई सेड दैट 15 मीटर पर सेकेंड. एंड हाउ मच टाइम ही विल टेक टू क्रॉस द सेम पोल? 30 सेकेंड. What is the ratio of time taken? 30 second and 20 second, 3:2. समझ में आ रहा है? सिंपल. it doesn't matter. आप एक ही पोल को दो ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों का अलग अलग टाइम निकाल लें आप. Is it okay? Understood it? Next one we are going to see. I said here. यदि आप I said that if I have to see that मैंने बोला ये प्लेटफॉर्म है सपोज एंड प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो ट्रेन को क्या करना होगा? चाहे वो कितने किलोमीटर दूर हो, डजंट मैटर. ही हैज टू कम फर्स्ट, ही हैज टू कवर द व्हाट लेंथ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. यहां से यहां तक क्या किया? प्लेटफॉर्म के लेंथ को कवर किया एंड देन ही विल क्रॉस इट्स ओन लेंथ. यस है ना? तो ये प्लेटफॉर्म हो या इट इज ब्रिज और इट इज द सेकेंड ट्रेन, he has to cross the length of other, yes or not, and length of itself. Is it okay? Ready for the question? A train length per second, moving with 20 meter per will take cross a platform of length to cross a platform of length 500 meter. कितना हो जाएगा? d1 प्लस d2 हो जाएगा. यस. 2 डिस्टेंस हो जाएंगे. यस. प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करना है एंड देन क्रॉसिंग आउट. इज इट ओके? क्रॉस द प्लेटफॉर्म एंड क्रॉसिंग इट्स ऑन लेंथ. इसका मतलब क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू व्हाट? d1 प्लस d2 और मूव एक ही कर रहा है तो s, there is no relative speed. And what is the length of the platform? 500 and length of the train 300 divided by the speed of the train, क्योंकि एक ही मूव कर रहा है, इसी को क्रॉस करना है सबको. So 800 upon, yes, tell me, 20, cancel out, 40 seconds. Got it? Got it? Next point I said, right now, अब इसे क्रॉस करना है मूविंग ट्रेन को. किसको करना है? और दो टाइप के ट्रेन हो सकते हैं. वन, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर
and one it is moving in the, लेकिन जब मूविंग इन द सेम डायरेक्शन हो तो जिस पीछे वाला उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं। अच्छा सर आपने बोला था, कर दिया मैंने, वही मैंने दोनों मूव कर रहे थे, माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया। अरे बता नहीं ऑप्शन में दे दे, दे कैन नेवर क्रॉस। तो यदि पीछे वाले की स्पीड कम होगी तो ही कैन नेवर क्रॉस ना, अंडरस्टूड? राइट डाउन अ ट्रेन लेंथ आ गया। So I said that one train length is, I said that 200, a train length 200 meter moving with 300 moving with 20 meter per second will take how much time to cross the what? Second train who is moving with 500 meter, sorry, whose length is 500 meter, moving with 30 meter per second towards each other on the parallel track. Yes or no? Same track तो हो नहीं सकता, नहीं तो फिर कभी क्रॉस नहीं करेंगे। Understood it? ध्यान से, तो they will come and तो दोनों अपने लेंथ को क्रॉस करेंगे। Yes or not? I said that तो t equals to what? d1 upon d1 plus d2 upon s1 plus, and what is the d1? 300 plus 500 and 20 plus, so 800 upon what? Cancel out, 16 second they will take to cross. लेकिन यही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दूं कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन हाउ मच टाइम द फर्स्ट ट्रेन जो जिसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो आगे वाली ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, तो व्हेन ही विल क्रॉस? नेवर। जो पीछे वाली हो जिसकी हाई स्पीड होगी वही क्रॉस करेगा, दूसरा वाला। तो क्रॉस करने वाले ट्रेन की स्पीड क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। यस आना, जैसे आपने कल की क्वेश्चन में भी देखा था। हाँ हाँ, तो उससे क्या होगा? दोनों की डिस्टेंस, दोनों का लेंथ तो क्रॉस करना ही होगा, चाहे पीछे से क्रॉस करे चाहे आगे से क्रॉस करे। बोथ हैव टू व्हाट? क्रॉस द व्हाट? ये ज्यादा ही लेंथ मान लो, ये आ रहा है तो इसको क्या करना होगा? पहले इसके लेंथ को कवर किया, फिर अपने लेंथ को क्रॉस किया। कभी देखते नहीं हो बैठे हुए सुपर फास्ट ट्रेन में, पीछे से आई और राजधानी निकल गई, हैं? देखते हो कि नहीं? आपकी स्पीड, आपकी ट्रेन की स्पीड कर दी जाएगी या तो आपको रोक दिया जाएगा, दो चीजें होगा। सो दिस इज द वे दैट वी हैव सीन। कई बार देखा होगा लाइफ में आपने, योर ट्रेन हैज बीन स्टॉप्ड, यस, पता चला आगे सिग्नल नहीं मिला हुआ है, लेकिन सिग्नल इसलिए नहीं मिला हुआ है कि पैरेलल ट्रैक में कोई आ रहा है पीछे से। तो आई सेड इज इट ओके? तो लिखेंगे a train length 500 meter moving with 30 meter per second, moving with 30 meter, then how much time it will take? How much time it will take to cross
to cross another train length 300 meter moving with 20 meter per second, moving with 20 meter per second in the same direction on parallel track. In the same direction तो आपने क्या किया 300 प्लस 500 I said that a portion दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और इसका मतलब S1 माइनस S2 300 प्लस तो डिस्टेंस दे विल क्रॉस ईच अदर मीन्स दोनों का अपना आपस के डिस्टेंस में दे विल व्हाट क्रॉस दे विल क्रॉस मीन्स 300 आल्सो 500 500 वाला है तो 300 भी क्रॉस करेगा और 500 भी अपना क्रॉस करेगा बट द रिलेटिव स्पीड विल बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन 30 माइनस 10 or 800 upon 10 seconds it will become what 80 seconds is it okay so we have seen I said this but the last question में आप ध्यान रखेंगे moving towards each other है but probability of making mistake will be high and थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ इसलिए कि मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ ना you can take precautionary measure जैसे कभी साइक्लोन आता है सुनामी आता है तो सुनामी का भी हम लोग क्या दे सकते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम तो यही WS दे दिया हूं मैं बी केयरफुल राइट डाउन अ ट्रेन लेंथ 600 मीटर moving with 40 meter per second a train length 600 meter moving with 40 meter per second and in another train and another train whose length is कितना स्पीड दिया था मैंने 40 another train length 480 meter moving with
What is the length of the first train and second length? 480. देखेंगे how much time the first train will take to cross a boy sitting in the middle of second train. I said कुछ बच्चों ने ऐसा लिखा है 600 प्लस 240 एंड अभी मुझे पता नहीं है सही है कि नहीं सही। कुछ बच्चों ने लिखा है 600 ओनली और नीचे का फिगर तो सबने सही किया हुआ है 40 प्लस 10 और ऊपर वाले फिगर में ही कुछ है गड़बड़। यस और जिसने 600 प्लस 240 लिखकर सॉल्व किया हुआ है उसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन नहीं है एक्चुअली में। सो आंसर जो करेक्ट है वो कौन है? 600 अपॉन में 50 वाला। तो आप लोगों ने थोड़ा सा मैंने टाइम दिया भी, सोचो। मैं बोल रहा हूं कि how much time the second train will take to cross the person sitting in the middle of the boy. How much first train will take to cross the what? Boy sitting in the middle of the train of the second train. Yes? आप लोगों ने सोच लिया ये आधा क्रॉस करना है, लेकिन बॉय को क्रॉस करने के लिए बोला, मैंने केवल उसकी पोजीशन बताई ना, सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड ट्रेन। यस और नॉट? मैंने क्या बताया, क्या बोला था? पर्सन बॉय, जब भी आप पर्सन और बॉय को क्रॉस करने के लिए बोला हूं तो पर्सन तो आधा ट्रेन क्यों क्रॉस करवा रहे हो? यदि मैं बोलता थर्ड फोर्थ में तो आप लेते, अच्छा थर्ड फोर्थ यार क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो आप लोग 480 का थर्ड फोर्थ निकालते, 360, 600 में 360 जोड़ देते, 960 हो जाता है ना। आप कहीं भी बैठे रहे किसी पार्ट ऑफ द ट्रेन में, ओनली यू हैव टू क्रॉस दैट बॉय एंड बॉय मींस फर्स्ट ट्रेन का लेंथ। यस है ना? तो इट मींस 240 आपने जो लिखा है उसको 0 रख दे एंड क्या होगा? यस, डिस्टेंस अपॉन S1 प्लस S2। तो जो फर्स्ट ट्रेन है वही बॉय को क्रॉस कर रहा है केवल, तो ही विल क्रॉस इट्स ओन लेंथ, क्योंकि मिडिल ऑफ द कुछ जो मिडिल ऑफ सोच लिए कि हमें करना है 240, यार दिल में बैठा हुआ तो 240। यस, तो ये नहीं करना है आपको। करना क्या है? यस टेल में S1 ट्रेन लेंथ, और जब बॉय सेकंड ट्रेन में बैठा हुआ है तो उसकी भी स्पीड उसी ट्रेन की लेंथ की, उसी की स्पीड हो गई, उसकी कोई स्पीड नहीं है। लेकिन if the train is moving with the 10 meter per second, then the boy speed will become also what? Yes or not? S1 plus 600 upon what? 40 plus 10, 600 upon 50. Answer is 12 seconds. Understood it? Should you? So shall I remove this? So we have finished with this label. Another, I said that graph based. This is the time graph. Class 9th 10th में चले जाएंगे आप. And this is, I said that speed. So which graph is this? Speed and time graph. Speed, time. A portion started, यहां पर क्या है? 0.
इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट 0। आप लोगों को कुछ याद हो, u इक्वल टू 0 ले लेते थे फटाफट, याद है। एंड ही स्टार्टेड विद, मतलब स्पीड बढ़ाते हुए पहुंच गया यहां पर पहुंच गया एंड ऐसे ही बाइक्स में तो ऐसे ही करते हो ना आप लोग, वही सुनने का तो मजा आता है व्हेन यू आर रनिंग द बाइक। And then speed reached, I said that what, 40 meter per second in how many seconds, 20 seconds में आप अपनी गाड़ी की स्पीड कितना पहुंचा दी आपने, 40, मतलब समझ रहे 40 मीटर पर सेकेंड है, बहुत ज्यादा स्पीड हो गया। किसने कहा 144, सो 144 किलोमीटर पर आवर। अब पता नहीं कौन सी बाइक है आपके पास। And thereafter you are moving, I said that, with the same constant speed। ये स्पीड टाइम ग्राफ है ना, अब अपनी स्पीड को क्या मेंटेन कर रखा आपने, सेम स्पीड। And then you moved till the next, I said that 40 second, next 40 second means 60 second, and thereafter you started decelerating, and when you started decelerating, in the next 30 second it is what, its speed becomes 0. Then find out distance traveled. Do it. Sorry, 90. Next 30 seconds. Distance traveled. कितने लोगों को क्लास 9th और 10th का कुछ थोड़ा सा याद है? हाँ? कुछ लोग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहले a निकाल लो, u यहाँ निकाल लो, यहाँ से u 0 हो गया, v हो गया आपका 40, तो एक्सेलरेशन आपका v माइनस यू अपॉन टी, टाइम कितना हो गया 20। तो यहाँ से तो चलो s इक्वल टू यू तो 0 है तो u2 खत्म हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर है, t पता चल गया, a भी पता चल गया, हाफ ए टी स्क्वायर निकल गया। यहाँ पे तो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दोनों सेम है ना, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है भाई साहब का, सेम कांस्टेंट स्पीड से तो सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू s इंटू टी, यस आर नॉट, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी होता है ना, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो u सेम मेंटेन रखें आप, तो यू टी आ गया। यहाँ पे भाई साहब डिसलेरेट करते जा रहे हैं, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन निकालिए आप, तो वो डिसलेरेशन ही कराएगा लेकिन एक्सेलरेशन वही फार्मूला लगाइए, फिर आप यहाँ पे भी निकाल दीजिए, है ना। तो
इसका केवल एक ही मेथड है, आप वैसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। इसका एरिया सबका निकाल दीजिए आप, क्लियर। ये हाफ होगा, हाफ इंटू 40 इंटू 2 20, यस और नॉट, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और ये दिख रहा हाफ 80 स्क्वायर है, ये क्या है हाफ, ये क्या है हाफ, क्योंकि S इक्वल्स टू UT में यदि कभी याद हो आपको तो U तो आपका क्या हो गया 0 है, तो ये पोर्शन, तो ये हाफ 80 स्क्वायर है, अंडरस्टूड। ये आपका V है और ये आपका T है। V इक्वल्स टू क्या होता है U प्लस 80, तो 80 आ गया। ये समझ में आ रहा, सिंपल एरिया। एरिया में क्या लेते हैं आप, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 20, हाइट क्या है 40, लिख लिया आपने। यहां पे किसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर जो भी है आपका, तो आपने ले लिया 40 और ये 40, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 40 इंटू प्लस यहां पे क्या लिया, यस टेल मी अगेन, ये ट्रायंगल आ गया, यस हाफ इंटू 40 इंटू 30, सो ये 20, तो ये आपका, तो ये 400 प्लस 1600 प्लस 600, यस 2600 मीटर ट्रैवल। तो 30 इतना यहां से यहां तक 30 है, दिस इज व्हाट 40। कुछ याद आ रहा है, आप लोग ऐसे भी डिस्टेंस निकालते थे एरिया से, हाँ ट्रेपेजियम निकाल सो आप। तो कहाँ किसको याद है, A प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ट्रायंगल, और यही इसका फॉर्मूला याद आता है, वही काफी है। अभी बच्चे तो सिंपल एक वर्ड में बोलते हैं सर हमने क्लास 10 के बाद मैथ्स नहीं उठाया, तो फिर सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है यस ट्रायंगल एंड ऐड करते चले जाओ। नहीं तो आप इसको ट्रेपेजियम मानते हैं, तो ये होता है हाफ सम ऑफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये आपका क्या होता है 40 है, तो आप लिख देते हैं 40, और ये कितना है 90, एंड डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, ये पैरेलल साइड हो गया ना यस और नॉट, तो इसका 40 लेंथ हो गया, इसका 90 लेंथ, और ये 40 हाफ से कैंसिल कर दिया 20, तो ये 130 इंटू 20 26। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अंडरस्टूड इट। शैल आई रिमूव, हटाऊं, कुछ क्लास 9th की यादें ताजा हो गई, एटलीस्ट क्लास 9th में पहुंचे तो सही आप, कि क्लास 9th में फिजिक्स में कुछ होता था ऐसा चीज, और मजा आता था S इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर, जहाँ पे मार्क्स मिल सके, और कभी लाइफ में समझने की कोशिश नहीं कर क्यों रहे, है ना बस ये था कि B स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर प्लस 2AS आ जाए डेराइव करने के लिए, तो उसको डेराइव कर ले, है ना। चलिए, आई सेड दैट अभी भी आप गलत नहीं करें, अभी भी आप जो पढ़ रहे हैं वो सोचिए क्यों पढ़ रहे हैं, गलती मत करिएगा। चाहे वो समय कि आप 10th को क्रॉस करके 12th IIT की ओर आए और डिफेंस इंजीनियरिंग के लिए, वेदर इट इज राइट नाउ, अंडरस्टूड। उस समय समझ जाते क्यों कर रहे हैं, उसका कहानी समझते तो IIT भी ऐसे ही लगता, अंडरस्टूड। एनी एग्जामिनेशन इज इजी, जस्ट क्यों और बेसिक को समझते चले जाओ। इज इट ओके? सो आई सेड नेक्स्ट आई सेड, और इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया है, लिखेंगे द फिगर drawn below gives the velocity graph of
The figure drawn below gives the velocity graph of two vehicles A and B. The straight line OKP represents the velocity of vehicle A at any instant मतलब किसी टाइम भी at any instant, whereas the कांस्टेंट नहीं, मतलब ग्राफ से आप यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए, आपको पता चल जाएगा। जैसे आपका ग्राफ है ना, यहाँ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ का पता लगा सकते हैं, यहाँ अपने आप ही ये टाइम पे क्या स्पीड चल रही है, ऐसा ग्राफ दे दिया जाए तो एट एनी इंस्टेंट यू कैन फाइंड, दिख सकता है। आई सेड whereas the horizontal straight line CKD represents the velocity of vehicle B at any instant, in the figure D is the point where perpendicular from P meets the horizontal line CKD such that PD equals to half LD, then what is the ratio between the distance covered by distances covered by vehicle A and vehicle B in the time interval OL? जो फिगर है ये OKP है and it is of A, velocity of A, और ये CKD है and it is the velocity of CKD is the velocity of what? B, और it is the velocity of A, और टाइम क्या है? OL। ये कौन सा ग्राफ है? और ये आपका कौन सा ग्राफ है? स्पीड मीन्स वेलोसिटी ग्राफ, जो क्वेश्चन में लिखा है। तो ये बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए का मतलब क्या है? हमें इसका एरिया निकालना है, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, तो बी यहां से यहां तक गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? तो ये किसका निकालोगे आप? इस रेक्टेंगल का, और इसमें किसका निकालोगे आप? ए का, ट्रायंगल का। तो ए का निकालना है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ, यही है ना, करें।
डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए का क्या हो जाएगा, ये लाइन जा रहा है, इसका मतलब क्या लेंगे हम, टेल मी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, हाफ OL इंटू PL, yes or not? एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, बी क्या चल रहा है ऐसे, यस। अब आपका पंगा किसके साथ हो रहा है, यस टेल मी, PL और DL, चाहे PL बोलो या चाहे LD बोलो, और PL आपकी PD की वैल्यू क्या दी हुई है, हाफ। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं स्टेल में, हाफ PL को आप ऐसे लिख सकते हो, PD प्लस DL। अरे PL को कैन यू राइट PD प्लस DL, और नीचे में आपका क्या है स्टेल में, DL बचा हुआ है, और PD इक्वल्स टू व्हाट, हाफ DL। तो आपने लिखा हाफ, और यहां पे क्या लिखा, हाफ DL प्लस DL। अरे PD इक्वल्स टू व्हाट, हाफ DL ना, तो PD इक्वल्स टू मैंने हाफ DL लिख दिया, और नीचे में क्या है स्टेल में, DL। आधा DL और एक DL कितना हो जाएगा, 3/2 DL, इट विल बिकम व्हाट। अरे सिंपल, ये तो हमने वही लिख दिया जो आपका है, दैट बिकम्स व्हाट, 3/2 DL, और मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो इट विल बिकम 3/4 DL। वन बाई टू इंटू 3/2 DL अपॉन व्हाट, DL, और DL DL कैंसिल, क्या बचा, सो व्हाट इज द रेशियो, 3:4। यही ऑप्शन में आपका 1:2, 2:3, 3:4, 1:1। इज इट ओके? और मैं हमेशा ये सब चीज बताते आता हूं, चाहे आप ग्राफ को भी हमेशा फॉलो करें। अंडरस्टूड? शैल आई रिमूव? ये ट्रायंगल का हो गया हाफ OL इंटू PL, और ये हो गया रेक्टेंगल का B के लिए, B की ऐसी चल रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, OL इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और दोनों में OL कॉमन है, कैंसिल्ड, तो यहां पे बचा हाफ PL और यहां पे DL। तो PL को लिख सकते हैं व्हाट, PD प्लस, और PD इक्वल्स टू हाफ DL दिया हुआ था, तो हाफ DL प्लस DL, 3/2 DL, तो DL DL cancel, 1/2 and 3/2 become 3/4. So what do you have got, 3:4. Shall I remove? क्या यहाँ पे फिजिक्स नहीं पूछ रहा है, एक्सेलरेशन और टाइम छोड़ दो, वो तो आप फिजिक्स में घुसना, फिर वो तो मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते हो, टाइम तो देगा ही देगा, आप वहाँ पे दिमाग लगा लेना जो दिया रहेगा। आपको ग्राफ आता होगा, मतलब कि एरिया निकालना, तो यू कैन फाइंड आउट, ओके। बस आपको एरिया रिलेटेड ही करवाएगा, आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप यू नहीं दिया है वो है, तो फिर वो बोलेगा फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे केवल आपका क्या रहेगा, मैथ्स। सो आई सेड दैट हमने कौन सा टाइम ग्राफ देखा, यस टेल मी, speed. Next one I said that distance time graph.
Find the distance traveled by the person. Fast. क्वेश्चन करो केवल मुझे। हाँ क्या डिस्टेंस फाइंड करना। इसमें एरिया क्यों निकालोगे ये मुझे बताओ। मतलब कुछ भी मिल जाए एरिया निकालने लग जाओगे। पहला क्या मिला था आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 100% क्या मिलेगा आपका एरिया, और आप क्या मिलेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, यस और नॉट। जो आपने पहले देखा वो कौन सा ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है डिस्टेंस। तो वो तो चलो उसमें आप एरिया निकालते हैं, लेकिन ये तो डिस्टेंस दिया है। ये भाई साहब यहां से 10 सेकंड में क्या हुए 20 मीटर पहुंचे, फिर उसके बाद 20 सेकंड घूमे ही नहीं, खड़े रहे, गाड़ी खराब हो गई होगी, है ना। 30 सेकंड के बाद फिर उन्होंने मूव किया, वो 40 मीटर मूव किया। तो फाइनली डिस्टेंस कितना मूव किया बंदे ने। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, कौन सा ग्राफ है। और ये क्या लिखा हुआ है, टेल मी 60 मीटर, और ये कौन सा है। तो पर्सन ने कितना डिस्टेंस मूव किया 60। लगे रोड एरिया निकाल। एरिया किसमें होगा, ये टेल मी फॉर स्पीड टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो जो जहां आपका पॉइंट दिख रहा है वही उतना मूव किया। कुछ याद आ रहा है। एक कहानी भी बना सकते, गाड़ी चली, गाड़ी रुक गई, खराब हो गया था, 30 सेकंड लगा, 20 सेकंड, वैसे इतना जल्दी तो ठीक नहीं होता है। हाँ, पहले वाली वेस्पा रुक गई तो उसके बाद फिर घुमाओ ऐसे फिर उसके बाद तो पहले की गाड़ियां चल जाती थी 20 सेकंड्स में, 10 सेकंड 30 सेकंड्स, फिर उसने 10 सेकंड्स में ऐसे चला। समझ में आया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड 60 मीटर। यहां पर ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन दे देगा और बच्चा बोलेगा ये तो वही वाला क्वेश्चन है, एरिया निकाल दो, और वो आपका एरिया वाला भी आंसर उसमें रहेगा क्लियर। यूपीएससी वो हर आंसर देता है दैट द स्टूडेंट कैन फाइंड आउट। Is it okay? Now, this is I said that distance time graph. Yes or not? ये क्या है? I said that a person who is moving it is A person. This is another person moving. It is B person.
and this is, I said that another person moving, C person. Whose speed will be higher at the point of B? Whose speed will be higher at the point of P? A, B, C में किसका स्पीड ज़्यादा होगा? ड्रॉ करें, फटाफट बताएं. Whose speed will be higher at the point of P? A. चलिए, यस, व्हाट द आंसर? तीनों का सेम. एनीबॉडी एल्स? बी. यस, क्या है? यस, एनीबॉडी? आप जब कुछ थ्योरी से कहते हो, अपने बैकअप से कहते हो, तो उस बैकअप को बताओ. यदि कहते हो तो हाँ. हाँ, तुम जस्ट आंसर. हुज स्पीड विल बी हायर? हाँ, यस. एक रहेगा ए, बी, सी, डी और एक ऑप्शन होगा नन. ए, बी, सी एंड डी ऑप्शन में होगा नन. तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? ए, बी, सी, नन? नन के साथ. चलिए, पहला फिगर ड्रॉ कर रहे हैं. आई सेड दैट दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ. यहां पर पर्सन क्या है? 5 मीटर मूव्ड. आई सेड दैट इन 1 सेकेंड. another 5 meter moved in the second. Another 5 meter he moved. I said that 3rd second. तो what is the, यदि मैं 0 इसको लूं और इसको लूं कि ये 15 मीटर पहुंच चुका है और ये 5 मीटर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे हैं. तो यदि मुझे इसका निकालना है, व्हाट इज द स्पीड? द स्पीड आपको निकालेंगे, यस, b माइनस यू बाई, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन व्हाट? टाइम. तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यस, टेल मी. कभी याद होगा ना, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, कुछ किया होगा. अरे s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, कुछ भी कर लो आप. तो यहां से यहां तक आपने सपोज करो कि 15 माइनस, यहां से यहां तक 0 से आप 15 माइनस 0 कितने सेकंड में पहुंच गए? 3 माइनस, सो 15 माइनस 3, 15 अपॉन 3, 5 मीटर पर सेकंड. आप चलो, मैं यहां से यहां निकालना चाहता हूं. तो ये 10 मीटर पे पहुंचा कितने सेकंड में? 2 सेकंड में. अब यहां से ये 5 मीटर पे पहुंचा कितने सेकंड में? तो 5 अपॉन 1. अभी भी क्या स्पीड निकल रही है? 5 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब दिस ग्राफ शोज यूनिफॉर्म स्पीड. यस और नॉट? तो गाड़ी चल रहा है तो एक ही स्पीड में, मतलब वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन नहीं शो कर रहा है. यस और नॉट? केवल एक ही यूनिफॉर्म में चल रहा है. लेकिन मैं यदि ये ग्राफ ड्रॉ करूं, दिस इज यूनिफॉर्म, लेकिन मैंने बोला यहां